Requesting both the captains to please come up for the toss time as the officials have made their way out in the center. It's a kind request to both the captains. So the captains have made their way out in the center. So does the officials. So it's the toss time. Requesting the official to please come forward and do the honors of doing the toss. Hello. It's the call and it's tails. So toss going the way of COG Lions. Captain, what's your decision and why? I want to bet first. Why is the decision taken being betting? Looking at this artificial turf, what do you think? So I think so. We have to bet first and make score. And Yes, winning the toss, batting first. What's your score in your mind? Where you have to go get to? What's the score in your mind in the first innings? Where you have to get to? about 250. Yes, 215, 20 overs. Good target being set. Kept 50 overs rather. Banjara Cricket Club skipper having won the toss. What you would have done? We have chose for bowling first. Yes. So both the captains, what they thought they have got it. तुझ्या माइंडान कितके टार्गेट आसा तू कितक्या भितर तांकां रिस्ट्रिक्ट करपाक पळयतलो 100 भितर तेमकां ऑल आउट करपाक. Yes, positive mindset from the both the captains. So the news from the center is that COG's Lions skipper have won the toss and elected to bat first.
opponents have also made their way out in the center. So soon we are going to start with the first ball of the first innings. So soon we are going to start with the match. Officials are ready. So does the players. This time wrapped on the legs for no runs. Dot delivery. Certainly looks to be a artificial turf, but a good looking deck here. This time watchfully played once again. Once again a dot ball. Rudra Gauss on strike. This time watchfully played once again straight to the man. Ansh Harmalkar. Ritesh Ilegar, the bowler, bowling the first over, and it's
a decent start. This time watchfully played once again, straight back to the bowler. Another dot. Decent over this is. Once again, trying to play that ball, fishing for that ball outside the off stump, missing the ball completely. Another dot to sum up the over after the completion of the first over. It is and Sharmalkar into the attack to bowl the second over, and it's going to be Ansharmalkar to bowl the second over to share the new ball. This time Aryan Chogule is known for this bit of cricket. Slow start at the start, but once he gets in, he capitalizes for what he has been through. Facing the first ball right under his eyes, watchfully played by Aryan Chogule. Once again drifting down the leg side, wide is the signal from the umpire. So extra as to the tally. This time once again a dot ball, single run on the scoreboard. Second over, and a decent start on the part of the bowling attack. Once again a decent delivery. Aryan Chogule is known for that big innings, converting that knock into 50 hundreds, what he is known for. This time into the offside. This is his bread and butter. You would bowl there all day long, he will play you like that and scamper for a single. Another run added to the tally, moving to 3. We are into the second over. This time the batter fishing for it, but ending up playing no shot straight into the hands of the wicket keeper. Sanch collecting the ball. A dot ball once again. Decent bit of bowling by Banjara Cricket Club. Second over, just 3 on the scoreboard. Let's it go, waiting for the umpire signal. And no ball comes in as a signal. So a free hit, a chance for the batters to capitalize. And on strike will be Rudra Gaus. Faced 8 balls for yet not has opened his account, but will certainly look for this opportunity of the free hit delivery.
This time a shortish one. Couldn't play at it. A third ball. Can't do much of that free hit delivery. Yet to open his account. Rudra Gaus. Second over is in progress. Just 4 runs on the scoreboard. Once again, a shortish delivery climbing on the batter. Another dot to sum up the over number 2 after the completion of 2. It's 4 for none. Aryan Chogule and Rudra Gaus, the 2 batters out in the center, and it will be a third over. It will be Ritesh Legar. This time, once again, strong shot into the offside region by Aryan Chogule, but straight to the man at the point region. Will be a dot. Same story continues in the third over as well. Starts off with the dot. Ritesh Legar bowling a decent over. First being a maiden, starts off from there on in the second over. First ball being a dot. This time once again, thickish outside edge into the third man region. The ball is racing and racing towards the boundary. It will be a boundary. First boundary from the bat of that man, a little master. Maneuvers the ball into the third man region for a boundary from the bat of Aryan Chogule. Aryan Chogule batting on 5 of 5 deliveries with 1 solitary boundary to his credit. Ritesh Legar after bowling that first maiden over, first runs for him. Drifting down the leg side, wide is the signal from the umpire. So another extra. Certainly after that boundary, Ritesh Legar searching for that corner of uncertainty, corridor of uncertainty, I will say, to break the shackles and go through Aryan Chogule. This time once again, drifting down the leg side, another 2 consecutive wides to get that score in double digits. It's 10 without a loss. Are COG Lions. Ritesh Legar, if you see, looks to be a great prospect. Once again, letting it go. This time, no reaction from the umpire, so will be a dot ball. A good comeback by Ritesh after being hit for a boundary. And after that, 2 consecutive wides, and then in comes a dot. Third over being a pretty long over for Ritesh. Will look to finish off in high. Once again, drifting down the leg side, well collected by the wicketkeeper behind the stumps, Sanj. Yes, it's looking like yes, behind the stumps. Without a loss. Again, a wide delivery. Looks to be a long over for Ritesh Legar.
Again, watchfully played by Aryan Chogule, and will be another run which will add to the tally. Will bring back that man, Rudra Gaus on strike. 10 balls for no run, but now on he should capitalize. Again, left alone, and will be another extra. So Ritesh Ilegar looking for that. This time a pitch, but away from the fielders, bit of a fumble as well. Will allow them to scamper for two quick runners between the wickets, both of them. Rudra Graus as well as Aryan Chogule picks up two, and this will open the account for Rudra Graus on his 11th delivery, scampering for quick two. 16 without a loss. We are still into the third over. Pretty long third over for Ritesh Ilegar. This time once again into that full length channel, straight to man, will be a dot ball to wrap up the over number 3 after the completion of third one. It is 16 without a loss. COG Lions. Start of the fourth over, and it is going to be Aryan Chogule who is on strike, Anshar Malkal to continue. Watchfully played the first ball. Second delivery, once again a strong defense of Aryan Chogule comes into play. Two balls watchfully played right under his eyes. This is a brilliant bit of batting. Once again blocking that ball. Strong defense. He's strong in that defensive work. Aryan Chogule always puts price on his wicket and plays with a positive mindset. Again clipped away in that leg side region, will be just a one. Rudra coming back on strike. Aryan still there, and looking for that bad delivery, giving respect to the good ones. Again the bowler drifting down the leg side. Umpire says it is a wide delivery. Another extra adds to the tally, moving to 17. 50 overs game, a one-day format for these young kids is a great opportunity given by the organizers to play their heart out. Another shot is climbing on Aryan Chogule, but fortunate that it didn't clip to the bat through to the wicket keeper. And it's brings that corner of uncertainty to the batter's minds. 17 on the scoreboard.
Aryan Chogule batting on 6. Rudra Gaus batting on 2. Both have faced 12 deliveries each. Once again, a strong bottom-handed defense by Aryan Chogule to sum up the over number 4 after the completion of 4 overs. It is 17 without a loss. The COG Lions. The 5th over is in action. Once again, it is going to be Ritesh Legar into his 3rd over. Rudra Gaus. On strike, appeal, but umpire strongly said no. So change of strike now. It is going to be Aryan Chogule on strike. This is a good ploy by the fielding captain as well, assisting with the opening bowlers. This time once again, lets it go. Aryan Chogule looking to get set. He knows these are the initial stages when you got to know the bowlers, got to know the pitch, how it is behaving. (18) for the loss of none in the 5th over. Once again, trying to play that ball. There is the man stationed on the boundary. Will pick it up and throw back. Meanwhile, a couple of runs more to Aryan Chogule and his side. (20) on the scoreboard. This time once again, a full length ball, right played under the eyes for dot rather, but good technique being shown by the batter, applying himself on the deck, giving respect to the good deliveries, putting away the bad ones. That there haven't been a bad delivery so far from the bowlers. This time once again, watchfully played. Will scamper for 1. Rudra, well, the throw came at his hand, but as soon as he realized that, he quickly dragged his bat inside. This is good techniques as well. Dragging your bat, the coaches always say, drag your bat inside the crease. So that sums up the over number 5. It's 21 without a loss. Once again, letting it go. Aryan Chogule starts of the 6th over. Starts off with a dot. And Sharmalkar into his 3rd. This time pulled away, was a shortish delivery away from the fielders, up and over the infield, and scampering for the 2nd run, and two comfortably cultured up, comfortably taken 2, and Aryan Chogule well is pretty strong in that area. Pull, cut are his favorite shots.
sixth over, and the opening bowlers have done well. I would say just 24, and changes in the field as well. The skipper has been pretty accurate with his field setting, so does the bowlers bowling according to the field. This time a good ball certainly was quicker than what the batter expected. Will be a single as well. The throw came right at the body of the batter, but well done. Ducking towards that ball and will be just single to bring back Aryan Chogule on strike. Certainly, if we look at the bowling analysis, they are looking pretty good. This time, once again, settling the ball, climbing up to Aryan Chogule. Well done. Keeping that ball defensively straight to the man with another dot. This time trying to pull that ball, and the field will fall short of him, and will be a misfield as well, but the ball doesn't carry to the boundary. Will be a couple of runs to Aryan Chogule to sum up the over number 6. After the completion of 6, it is 27 without a loss. Well, Aryan Chogule was not in control of that last shot, but was pretty fortunate that it didn't go into the hands of the fielder. So 6 overs done and dusted. It's 27 without a loss with Rudra Gauss batting on 3 and Aryan Chogule batting on 14 of 22 deliveries. Appeal on the very first delivery of the 7th over. Ritesh Legar into his 4th has done well with 1 made and 15 runs in the 3 overs initially bowled. This is the 4th one for him and the 7th over of the innings. This time Rudra not looking in proper touch today. Is searching for the timing, proper timing onto his bat, but certainly as he will face the deliveries, he will definitely get the timing onto his bat properly. This time watchfully played straight to the man, will be another dot. He has faced 17 deliveries for his 3 runs, but certainly as the time progresses, he will certainly get his timing back. As we say, time is the best medicine for every problem. This time once again trying for that big lofted shot, missing the ball completely, will be another dot. As far as we look at Ritesh Legar, he is looking in sublime form with the ball. Open up the bowling for Banjara Cricket Club. This time Rudra once again leaving that ball through to the wicket keeper, another dot. As I was talking about, Ritesh Legar is open the ball bowling for his team and certainly done well. This time once again watchfully played, defensively played by Rudra, will be another dot.
This time, once again, the ball keeping touch low was uncomfortable, Rudra, but nonetheless, getting a single to wrap up the over number 7 after the completion of 7 overs. It's 29, I guess, on the scoreboard. After the completion of 7, it's 29 without a loss. The COG Lions. And once again, it is going to be Sharmalkar into the attack. Shortish delivery. Wide is the signal from the umpire. And good start. Putting the batter on the bat foot. It knows Rudra Gaus have faced lot of deliveries. Batting on 4 of 21 and certainly putting him onto the back foot with that bouncer. This time letting it go wide is the signal. Good judgment by Rudra as well. Outside the guidelines of the wide, says the umpire. 2 consecutive wide balls by Ansh Sharmalkar, but certainly opening that over with a bouncer was a good strategy. This time once again a shortish delivery. Once again a dot ball. This time a quicker delivery certainly was quicker than what the batter expected. Good bit of bowling by both these opening bowlers as well, keeping the batters in check. Now it has become sunny as well on the ground, bright sunshine. Once again a shortish delivery might have hit the helmet of Rudra. Certainly looking in discomfort. Rudra will be looking for that some attention on the pitch. The short ball climbing and climbing towards his helmet. Bit of a breather taken because the batter has been hit on the helmet. Hello. So Rudra Gaus has come out
with some head injury and invokes the experienced guy, Sanch. Sanch, the experienced man, opens his account with a single. This is the pair to watch out for now. At the one end, it is Aryan Chogule. At the other end, it is Sanch Naik. This time, once again, left alone by Aryan. I have seen them bet. Both of them have done well in competitive cricket. Experience, both of them are. Once again, a single cultured up. Aryan Chogule. That man was looking for that single but denied rightfully by Aryan. 16 for Aryan Chogule and Sanch, where he has come in new. He has just scored a single of single delivery. On Sharmalkar and Ritesh Ilegar, they have both bowled 4 overs each. And it will be a change in bowling. It will be another name that has made his name for himself. Roman Mullam into the attack as a first change bowler in the attack and in the 9th over. Here comes Roman. Will be up against Sanch, the new batter in after that man. Rudra Gauss hit on the helmet, has come out retired hurt and invoked Sanch. This time cut away and said Sanch, welcome to the crease, Roman, with a boundary. What a shot by Sanch, cut away up and over the point region, and will be a first boundary on the very second delivery for Sanch, and welcoming Roman to the crease with a boundary. Decent batting. This is knowing the new bowler has been introduced. It will take time for him also to settle down. Puts the pressure because he knows the game of Roman Mullam. These guys, they play with each other for quite a bit and up against each other for quite a bit as well. Once again, well left by Sanch. We will see this with him. He will respect the good balls, put away the bad balls. This is the cricket for Sanch. He will stay there for long and he will score a bulk of the runs for himself. This time watchfully played under the eyes by that man, Sanch, who has been standing tall, standing like a rock in the front of the wickets in the initial stages now. Roman Mullam has come back well after that boundary, 2 dots. Let's it go. Another dot. It will be now persisting that outside the Oxstrom line channel. Roman Mullam
and Sanch getting giving the full respect rather to the good balls that are being bowled by the bowler. This time once again played down the ground, fielder just a fumble will allow them to scamper for one. Quick running between the wickets, and this is what this pair is known for. This section from this ground, historic venue of Chogule Cricket Ground, Allem, is coming to you live on YouTube through the coverage of Photosonic Productions. You can watch it live on Photosonic Productions as well. These young kids, the future of Goa, is battling it out. Meanwhile, a good over from Roman Mullam comes to an end. Just 5 of it is 39 without a loss. COG Lions. In comes the second change. The bowling has been changed from both the ends. It's going to be Sadanan Lamani into the attack to bowl his first over. And bowls Abima. Bowls Abima, starts off with Abima and knows the signal from the umpire. So free hit will be coming along with the no ball, and the warning as well for Bima should be given and will be given by the umpire as well. The ball might have slipped out of his hands, but when he comes, he looks to be a good prospect. I have seen him in various competitions. I have seen him bowl in that junior cricket championship. He looks to be a good bowler, good all-rounder as well. And first being about no ball, the free hit has been treated with a boundary by Sanch, equal to the task. Sanch says, a good bowler, welcome to the crease with a boundary. Sadanan Lamani is always looking a good prospect, good with the ball, good with the bat as well. When his team needs him, he's up to the task. It certainly needs to be seen how this track will behave when the spinners come on. This time flicked of the wrist into the leg side region. Another single being added to the tally. Sanch batting on 11 now of just 8 deliveries, just 9 deliveries rather, with 2 boundaries in his batting. Aryan Chogule, as always, has stood like a rock and batting on 16 of 25 deliveries. This time, once again, a decent delivery. This is what I was expecting from Sadanan Lamani. He has bowled one Bima, a no ball, the free delivery went for a boundary, but he has not taken the pressure upon himself. He's always cool, calm as a cucumber. This time again a full length delivery, almost a yorker, well digged out by Aryan Chogule as well, showing the full face of the bat to the bowler and digging it out. We are still into the initial stages, 10th over of the innings. Long format, 50 overs game. This time was a shortish delivery, trying to pull it, getting the inside half of the bat. The slip fielder will come along, collect the ball and throw back to the wicketkeeper's place, but meanwhile a couple of runs.
to Aryan Chogule. Sadanand Lamani in his first over itself has given away just 6 up till now. In spite of that, no ball and a boundary has been a decent over. This time, once again, a strong-looking shot from Aryan. Straight to the man, a bit of a fumble will allow them to scamper for one. This is a good bit of running, good bit of game awareness between both of them, Sanch Naik and Aryan Chogule. In the initial stages, Aryan Chogule was not ready for that single, but as soon as he saw that field a fumble, he has scampered for one. No loud call, just watch and run the partner. 10 overs done and dusted. Meanwhile, 48 without a loss, the COG Lions. Comes in Roman Mullam for his second over. Sanch on strike. Changes in the field, as we see. This time, watchfully played by Aryan. Will be a dot ball. The start off from Roman Mullam, keeping up the pressure from where the opening bowlers have put on. Eleventh over we are in. This time, short ball cut away, but straight to the man once again. Will be another dot. Aryan Chogule 31 balls, 19. Sanch quick fire 11 of 9 deliveries. Slow one, ending up bowling full toss, bit of a misfield, and the ball is racing and racing towards the boundary quickly, and so that the batters are climbing up for that couple of runs. Quick running between the wickets, quick leg work by both of them. They are fit and they are quick runners between the wickets by the natural instincts. Just no loud call, watch into the eyes of the partner and run away. This time, let's it go. But the umpire thinks well within the guidelines of the wide. A dot ball, 50 comes up on the scoreboard with that couple of runs. Good partnership of between these two. 19 of 20 deliveries. This time, watchfully played under the eyes, straight back to the bowler. Roman Mullam collects it, and Roman Mullam has been a decent prospect so far. Just 7 runs in 1.5 what he has bowled. This time, cut away straight to the man, well fielded. Will finish off with a dot, and after the 11 overs it's 50 without a loss. COG Lions.
Meanwhile, a fresh over has been started. Sadan and Lamani into the attack to bowl his second over. Just 9 given away up till now by Sadan and Lamani. Has been a decent partner to Roman as well. This time once again a fuller length, guided away that ball straight to the man in the offside region, because they know this is 50 overs cricket. You can't go bizarre in the initial stages. You need to get set because this is a tough wicket and artificial tough wicket, and you certainly need to get adjusted to it. This time once again no proper timing. Strikers end, but overthrows, and will be a couple of runs to Sanch. Ever since Sanch have come to the crease, Aryan Chogule also feeling free because he knows what Sanch can do once he gets set. So does Rudra Gauss. We will see him bat in the later stages. For now, he has walked out after hitting that ball onto the helmet. But he is a strong warrior. He will come back and come back soon. We are still into the 12th over. Lot of overs to go after this. 38 overs after this. This time once again watchfully played, straight back to the bowler. Sums up the over number 12 after the completion of 12 overs. It is 52 without a loss, COG Lions. With Sanj Naik batting on 13 of 15 deliveries with 2 boundaries. Aryan Chogule batting on 21 of 35 deliveries with 1 boundary to his name. In walks Roman Mullam with the ball in hand for his third one. Full length delivery guided away into the third man region, will be just a one. This is what Aryan Chogule is known for. Single double, single double. He will keep on getting you that runs quickly. He will not keep the strike with himself, and will not creep up the pressure on the other batter batting with him. Every now and then looking for that cheeky singles, doubles. This time once again Sanj looking for that strong shot on the offside region, will be another single. As I was talking about, Aryan Chogule is known for that keeping up with that scoreboard. So does Sanj. Full toss one from Roman. A good looking shot, and will be a boundary. Will be a boundary from that man, the little master Aryan Chogule, with his second boundary. Has reached to 26. 26 of 37 deliveries, what he is batting on. What a good looking shot. Was trying to bowl that slower delivery. Slower delivery. Roman ending up bowling a full toss and getting treatment what it deserved. Meanwhile, a good comeback. Comes back with a dot. Aryan Chogule. He will be a headache once he gets set to the bowling side. Bowling side will look to get him early. The skipper will be planning something.
This time once again pulled away. But there is a man stationed. Throw coming the bowler's end. And Aryan Chogule was safely inside. Another single for Aryan Chogule will bring back Sant Naik on strike to face the final delivery of 13th over. Watchfully played, guided away in that leg side region. Bit of a fumble will be another single to end up the 13th over after the completion of 13. It is 60 without a loss. COG Lions. So Aryan Chogale is back and invokes the new man. $63 for 1. This time lets it go wide is the signal from the umpire. Okay. Once again, a decent delivery
from the bowler, and it's looking like the new man is trying to get settled. This is bound to happen when you're all round good bit of cricket going on the ground, the historic venue, and the young kids have walked on the park and walked on with some intentions in their mind. This time the ball certainly climbed up. The batter didn't expect the ball to climb up that much. Will be another dot. 50 overs cricket you bind to take the dot balls, because you know this is a longer format and you need to sustain through the 50 overs. This time played into the leg side region, square leg. That a long leg will pick it up, throw to the bowler, throw to the wicket keeper. Meanwhile, a single that has been cultured up. Let's it go. No reaction from the umpire, so will be a dot ball. Good bit of action also going on the ground. Comparative cricket, this is called. Once again, the fielder trying to stop that ball. We will be looking towards the umpire. It has been signaled as a boundary, and a good looking shot, and will fetch him a boundary. Was good effort put in by that fielder as well, but in the end the ball winning the race. Down the ground, well stopped by the field, by the bowler himself in his follow through. Will not stop the batters from getting a single as well. Once again, was a bad delivery, guided away in that leg side region. Will be straight to the man. Will be a decent over so far. This time once again, a bit of appeal, but umpire not interested. Let's it go. Let's it go. Well left towards the wicket keeper. Longer format bound to be played in this way. Keeper
a check on your wicket and play along the innings. Good looking shot, trying to play that ball, but ending up hitting on the legs. As soon as that ball hit the leg, the batter seems to be in bit of pain. It's 73 for 1. Watchfully played by Riyansh to sum up the over number 16. After 16, it is 73 for 1. And that one wicket of Aryan Chogule, a prize wicket of Aryan Chogule, picked up by that man Lamani, and cotton bowled for 28 of 43 deliveries with 2 boundaries to his credit. And as we see, it's looking like first time it will be change in bowling. It is looking like it is going to be Abhishek Lamani, one of the best in the business. Abhishek Lamani comes on to bowl and comes on to bowl in the 17th over. Decent bit of cricket. Abhishek Lamani up against Sanj is going to be a bit of contest. The battle to watch out for. Sanj up against Abhishek. In this calendar year, this batter has been seen a lot of times. This time Sanj playing to hit it, trying to hit it hard, missing out on the opportunity which was given by Abhishek Lamani. Was furious with himself. He knew that ball was bound to be hit. A gentle loosener from Abhishek Lamani. Once again, straight to the man. He's always seen bowling in good bowling in good areas and good line and length. Abhishek Lamani. This time the ball keeping touch low. Well collected by the wicketkeeper behind the stumps as well. 3-dot deliveries to the batter, who is well set on the crease. Let's it go away from the guidelines of the wide. Wide is the signal from the umpire. So another extra and first runs for Abhishek. Rather, couple of runs given away. This time watchfully played. Was a strong shot in the offside region, but he is bowling according to his field. Abhishek Lamani, as always, and has been a decent over so far. In the air for quite a bit, away from the field. The boundary rider will pick it up and throw towards the fielder, or rather the wicket keeper. Sanj tickling along for a single. Riyansh on strike now, letting it go. Wide is the signal. Another extra adds to the tally. Now Abhishek Lamani needs to control his line and length. I have said he's always bowling in that good line and length channel, but is bowled 2 wides in this over.
Once again, a decent delivery, watchfully played by Reyansh to sum up the over number 17 after the completion of 17 overs. It is double 77 for the loss of 1. Chetan Labani into the check, back on. Sancha picking up a single on the very first delivery, giving a strike to Reyansh, his partner, who is batting on 1 of 6 deliveries. Was a good ball played along in the leg side region. There is a fielder patrolling. The fans will pick it up and throw to the wicket keeper. Meanwhile, a single cultured up. As we see the scoreboard, Rudra retired hurt on 4. Aryan Chogule 28 of 43. Sanch not out on 26 of 33. And Reyansh is batting on 2 of 8 deliveries. Meanwhile, a good bit of battle going on. 79 for the loss of 1 in the 18th over. You feel that the bowlers have done touch well. This time in the air, shot of the fielder, just bouncing in the front of the fielder. A good effort and a catch would have been taken. But applauded by his teammates, that fielder. And the squalic region. And will be decent work done by that fielder. This time the ball keeping low and watchfully played by the bowler, by the batter as well, ending the 18th over with a dot ball. After 18 it is 79 for 1. In comes the bowling change. In comes back with Abhishek Lamani. This time outside edge. The ball is running towards the fence. The fielder behind giving a chase. Will pick it up. And meanwhile, good running between the wickets as well. Couple of runs taking the tally to 81. Reyansh the man on strike up against Abhishek Lamani. This time once again playing that ball straight to the man will be a dot ball. It's not easy to play against the bowler like of Abhishek Lamani. He spins. He has that top spinner, he has that off spin, leg spin, lot of variations in his armory.
and always uses those variations to a good effect. A thoughtful bowler in front of a thoughtful batter is the battle going out in the middle. Rayansh also applying himself, and this is the whole and soul motto of the age group cricket. Appeal, but denied by the umpire. The coaches always say, whatever you do in the nets, just go and apply yourself on the pitch in the match time. Applying yourself, playing that hard yards of cricket is pretty important, especially when it comes to age group, because this is the stage where you learn to spend your time out in the center. Meanwhile, another dot. Good bit of bowling by Abhishek Lamani. To sum up the over number 19 after the completion of 19, it is 82 for 1. The COG Lions. Back on comes Chetan Lamani for his fourth over. Has picked up 1 wicket and just a wicket to fall of Aryan Chogule. This time watchfully played by Sanch. He is batting on 26 of 36 deliveries with 3 boundaries to his credit. This time a shortish delivery, wide is the signal. Wide is the signal. I would see the leg umpire might show that one bouncer for the over, but no reaction has come from him. But the main umpire has signaled it a wide ball. Now straight to the man and well stopped. 83 for the loss of 1 in the 20th over. This is where COG Lions are there up till now. Once again, the ball keeping low. What is done? The ball kept low and the batter didn't know what is happened. He is still shocked, but the wicket has fallen, and the important wicket of Salchanaik is walking back to the pavilion, still shocked. What has happened? Earlier the ball certainly climbed up to him, and now the ball has kept low, and so much low that his wickets are gone, and the second wicket has been fallen, and in the unfortunate way for that man Sanj Naik, it's 83 for the loss of 2. Sanj well, he was batting well, and he got out on 26 of 39.
And new batter who has walked in. New batter who has walked in is Arman Sheikh. He's a good batter, a strong lad, can turn the ball a long distance. This time, once again, watchfully played straight to the man. Appeal for an out. Appeal for the run out. But the square leg umpire not interested at all. Meanwhile, Arman Sheikh has opened his account. I have seen him bat. I have seen this lad bat Arman Sheikh, and he is capable of hitting the ball a long distance once he gets set. The answer for time being on strike. This time, once again, the ball keeping low, but once again, the Stumps have gone for toss the third wicket, and the third wicket in the credit of the same man. It is Chetan Lamani who has walked through the batting lineup of COG Lions. 3 wickets for him, just for 15 runs. Chetan well, he has picked up firstly Aryan Chogule, then Sach Naik, and now it is Reyansh. 3 wickets up till now for Chetan Lamani. And if we look at his stats, it is 3.5 overs, 15 runs, 3 wickets. So 3 wickets for Chetan Lamani, and he will be pretty confident. A new batter who has walked in after Reyansh is Avinsh Kerkar. Let's it go. Will be a decent over from Chetan Lamani. Bowling 4 overs for 15 runs and 3 wickets is the stat for Chetan Lamani up till now. After the completion of 20 overs, it is 84 for the loss of 3 COG Lions. Meanwhile, by the signal from the umpire, so Avinsh Kerkar on strike.
This time, watchfully played straight back to the bowler. Abhishek Lamani bowled a no ball, I guess, of the first ball, and Vince Kirker. Will be off strike now, picks up the single, quick running between the wickets and making his partner run without a mercy. Arman Sheikh doesn't like to run much. He is a kind of a guy who certainly thinks stand and deliver. This time the ball doing a bit and straight back to the bowler just for a single. Arman Sheikh back on strike. Now he was looking for his natural instinct, just stand and deliver, but missing the ball completely. 86 for the loss of 3 in the 21st over. This time played into the leg side region just for a single, and this comes to a close of 21st over. After the completion of 21, it is 87 for the loss of 3 COG Lions, with Vince Kirker batting on 1 and Arman Sheikh batting on 2 of 5 deliveries. And into the attack for the 22nd over, it is another well-reputed bowler, Ayush Gaukar. Ayush Gaukar into the attack, bowling the 22nd over of the innings. A fresh bowler being introduced in front of Arman Sheikh. This time into the offside region, there is a fielder there. We'll start off with Dot Ayush. Arman now will certainly look to get set, and as the innings progresses, he will play his natural game for sure. This time trying to play that ball cut away into the offside region. Was fortunate that didn't nick to the wicket keeper. Will every now and then has that natural instinct of hitting the ball out of the park, Arman, but good bit of bowling as well, persisting with that outside the Oxstrom line channel. The bowler once again, a play and a miss. A play and a miss once again by Arman. This is a good bit of bowling as well. 3 dots consecutively by the fresh bowler. This is bound to happen because you want to know the new bowler, how he's bowling, at what speed he's bowling. This time once again clipped away into the extra region. There is a boundary rider patrolling the fence. Will just give away a single run. With the single, the score will bring up 88 runs on the scoreboard for the loss of 3. This time once again watchfully played straight to the man. Will be another dot. So decent bowling this is. Just a single run given away by the bowler so far. This time once again a full line delivery appeal but denied by the umpire.
The bat might have hit the ground on the way. Another dot. Good bit of bowling continues for the team Banjara Cricket Club. It's 22 done and dusted. It's 88 for the loss of 3, going at the rate of 4 runs per over. Meanwhile, a fresh over, and it is going to be Abhishek Lamani. This time watchfully played once again, scampering for a single. Throw comes the way of the bowler, but missing the stumps. Will be another single. Abhishek Lamani, well, he's a great bit of bowler. Into his 4th over, just 11 conceded. Now Arman Sheikh in front of him. Watchfully played by Arman. Will be another dot ball. We are into the 23rd and just 90 on the scoreboard. This is the show certainly how disciplined has been the bowling of Banjara Cricket Club up against the batters of COG Lions. Swing a miss. Might be the batter sneaks through. Was there an edge? The reaction of the bowler certainly suggests that this time straight to the man. Will be another dot. Will be another dot from Abhishek Lamani to sum up the over number 23 after the completion of 23 overs. It is 90 for the loss of 3. In comes Ayush Gaukar for his 2nd over, and up against Avinsh Kirkar. This time once again watchfully played by Avinsh. Will be a dot ball to start off the proceedings in the 24th over. 90 for the loss of 3. We are still into the 24th over, and where the total is hailing in 50 overs format is needs to be seen. This time once again watchfully played, running for a single, quick running between the wickets. Yes, they do get there. And now the big hitter is in front of Ayush Gaukar. What he will do up against Arman is needs to be seen. He will now look to go big. He's getting into his zone. Arman Sheikh has faced 14 deliveries. Drifting down the leg. Arman for sure has in his mind that I have faced a lot of deliveries. Now is the big shot coming. Yes, up and over the infield and away from the fielder, and this is what I was talking about.
He has got himself a boundary. And boundary in some fashion. Is this the opening which was required for Arman? And will he get going? The team of COG Lions, well, they have got to 96 for the loss of 3 in 23.3 overs. Once again, down the ground, Arman. And will be just a single. This is good bit of batting by Arman as well, getting a boundary, then getting a single, going to the other and watch his partner bat. Now Vince Kerker has the 2 balls left of the 24th over. What is going to do? Drifting down the leg side, the bowler helped along into the leg side region of the legs and will be a single to Vince Kerker to bring back Arman on strike. 98 for the loss of 3 in the 24th over. Arman on strike. This time watchfully played away from the field in the 30-yard circle. The boundary rider will pick it up and throw towards the bowler. Meanwhile, another single. To wrap up the over number 24 after the completion of 24 overs is 99 for the loss of 3. Arman Sheikh back on strike, batting on 10 of 17 deliveries with 1 boundary to his credit. And Avin Skerker, well, he has faced 9 deliveries for his 4 runs. And in comes Abhishek Lamani for his 5th one. Consecutive overs, back-to-back overs for Abhishek Lamani. In the middle phase, watchfully played by Arman. Starts off with the dot. Well, we are into the 25th. We are certainly looking for that halfway through. Once again, a decent delivery. Well collected by the wicketkeeper as well. Certainly, Arman was in 2 minds whether to play it or leave it. Once again, watchfully played by Arman, was looking for that single, but the bowler comes in, his follow through, picks the ball up, another dot. This time, once again, away from that field, will allow them to scamper for 1. Good bit of bowling by Abhishek Lamani, and this single brings up 100 on the scoreboard for the team COG Lions. This time, once again, away from the guidelines of the wide. Wide is the signal from the umpire. So another extra run and another extra ball to be bowled by Abhishek Lamani in this over. This time watchfully played under the eyes. The batter, Vince Kirker, defending that ball for dot ball. Once again, watchfully played. A dot ball to sum up the over number 25 after the completion of 25 overs. It is 101 for the loss of 3, and we are through with the halfway stage of the innings.
25 overs done and dusted is 101 for 3. And the 26th over to be bowled by Arav Virajdar. Starts off with the dot ball. Arav, he has been a regular customer. Whenever he plays, he bowls well. Misfield, and Arav, as soon as he saw that Misfield has his hands on his head, was a good ball from Arav, might have flown through in the air. The fielder misfielding that ball, allowing a couple of runs, and couple of runs that to that man in Arman Sheikh. What will be the result of this? The time will tell us. This time swing miss, the wicketkeeper collecting the ball. Good comeback. This partnership of 19 of 34 deliveries certainly looks to be a good one. This time slower in the air. Again the fielder has been fielded and will be another single. Avin Skerkar now on strike up against Arav Virajdar. What is the mindset of Arav? It needs to be seen. This time watchfully played by Arav. Again a quick bit of leg works. Quick bit of leg works with the person who doesn't like to run a much. Arman Sheikh certainly might be thinking, look guy, I am not comfortable running. You give me the strike, I will hit the ball a long distance. This time once again watchfully played by Arman, picks up a single, goes to the other end. But no, it's end of the over number 26. After the completion of 26 overs, it's 106 for the loss of 3, and Arman Sheikh will retain the strike in the 27th over. And in comes the bowler who has picked all 3 of those wickets to fall in the innings of COG. It's Chetan Lamani back into the attack with his 5th one. Already bowled 4 overs for 15 runs and 3 wickets. Back with Chetan Lamani with Arman Sheikh on strike. Watchfully played by Arman into the leg side region. Will be a single. Will he come back for second? No, he don't. Certainly 27th over and 107. This shows how the cricket is hard fought. One side, the batting side, looking for that big runs on the scoreboard. But equal to the task are the bowlers and the fielders as well. A single, meanwhile, as we always see batting and bowling is an important aspect of cricket, but fielding is also the unsung hero of the cricketing field. Once I remember, Sir John T. Rhodes backed man of the match for not for bowling, not for batting, just for his fielding. So this is what the importance of fielding as well. Meanwhile, pulled away in grand fashion and pulled away smartly. One bounce into the boundary cushions for Arman Sheikh, and
Certainly, Arman Sheikh has broke the shackles and he has raised to 20 of 28 deliveries. This is what is the natural game of Arman Sheikh is. He is now looking set and looking to go big. 112 for the loss of 3, and he's taking on to the bowler who has picked up all of those 3 wickets. Chetan Lamani has been put under pressure. This time once again consecutive 2 boundaries from the bat of Arman Sheikh. And this is what Arman is made up of. He is not going to held back. How tall the bowler you are. You are being hammered for 2 boundaries. Arman keeps up with his strike rate in quick succession. 24 of 29 with 3 boundaries to his credit, Arman. And 2 of those have come up against the bowler who has been the bowler of the day so far for the bowling side. This time once again fishing outside edge and might be the 3rd boundary of the over. Yes, it is the 3rd boundary of the over for the batter Arman Sheikh. And up against whom? It is the bowler of the day for the bowling side, Banjara Cricket Club. It has come up against Chetan Lamani, and this is going to haunt not only the analysis of Chetan Lamani, it is going to haunt the confidence of Chetan Lamani as well, and it will come good definitely for the batting side. Lofted in the air, the fielder will fall just in front of him to wrap up the over number 27 after the completion of 27 overs. It is 121 for the loss of 3 with Arman Sheikh batting on 25 and his partner Avin Skerkar batting on 6. In comes the 20th over, in comes the bowling change, in comes Arav Virazar once again. This time lofted in the air, the fielder in and out. Ran, covered the catch, but in the end couldn't hold on to it. The fielder and alive to Arman Sheikh. And is this going to prove costly? Is this going to prove costly because Arman Sheikh has started to play his natural game? This time once again straight to the man. Avin Skerkar knows how important is giving strike to the man who is at the non-striker's end. This time lofted in the air. Fielder will stop it but couldn't stop the batters from getting run out. Avin Skerkar ran himself to the other end and got run out. A suicidal wicket. Run out Avin Skerkar. Arman Sheikh stood at the non-strikers and didn't even move, but Avin Skerkar ran and both the batters were caught at the same end and run out happened at the striker's end, and Avin Skerkar walking back to the pavilion after scoring 6 runs of 15 deliveries, I guess. Avin Skerkar getting run out
Ritesh Iligar and Yash Naik combining to get rid of Avin Skerkar for 6 of 15 deliveries. The fourth wicket is down for COG Lions at the score of 122. 122 for the loss of 4 in the 28th over. Coming back live, the new man walking in, Arjun. Has played 89 matches, has scored 1,445 runs with an average of 24.91, strike rate of 132.445. Has walked in just now to accompany Arman Sheikh, who is looking in sublime form. Has batted well and has scored 26 of 32 deliveries with 3 boundaries to his credit. But what a time to get that breakthrough. A suicidal wicket, a suicidal run out to get the wicket of that man. Hello. Now it's the time to look at Arjun. How is batting in front of that man, Arav Mirajdar. Watchfully played the first ball. He knows how good the bowler is. Arav Mirajdar has done well. This time once again beating the batter all ends up. And what a start in the front of a new batter in. This time watchfully played straight to the man in the point region. A dot delivery once again to wrap up the over after the completion of 28 overs is 122 for the loss of 4. Arman Sheikh on strike
29th over, and it is going to be Chetan Lamani, who has bowled well, but who has taken the best bowler under the hammer. Is also on strike. The battle to watch out for in the 29th over. Of the legs flicked away and fixed away in the fine session. Stylish looking shot will only fetch one. This time a good looking shot down the ground will be a single, and a fortunate thing for COG Lions is that Arman Sheikh is on strike in the 29th over. This time a good looking shot into the gap. The fielder will cut it off. Will be another single. So this over has been certainly the work of singles for the COG Lions. How will the over be closed out by the bowler is needs to be seen. Arjun, the man on strike, up against Chetan Lamani, who has been the bowler of the day. This time trying to sweep that ball away from the batter, away from the guidelines of the wide as well. So extra run and extra delivery to be bowled by Chetan Lamani in this over. This time once again away. And away from the batter, down the leg, wide is the signal, and well collected by the wicketkeeper as well. Behind the stumps will be another extra run and another extra ball to be bowled in this over. Pretty long over for Chetan Lamani, this one. Full length delivery. Playing straight to the man in the offside region will be a dot ball to come back in this over. Final two deliveries to go in the 29th. In front of Chetan Lamani, Arjun, the man on strike, the new man who has walked in at number 6. This time flicked away into the leg side region will be a single. Will they come back for two? No, they don't. And to face the final delivery of the 29, it is going to be Arman Sheikh, the man on strike, betting on 28 of 34 deliveries. This time once again wide is the signal, trying to keep that ball away from the hitting arc of Arman, knowing how big he is, how big he can go, trying to keep that ball away from the hitting arc of Arman, ending up bowling a wide. This time trying to pull that ball was a slower delivery and couldn't do so. To sum up the over number 29, after completion of 29, it is 130 for the loss of 4, and it is going to be a change in voice. It is going to be young sensation, a new one, new voice coming your way. Aryan Chogule on the microphone. Hello. Hi, my name is Aryan Rajesh Shogle. I'll be there with you for 5 minutes.
Here is the beautiful ball bowled by Abhishek Lamani. Sorry, my mistake. Arav. And good stumping by Yash. It looks like Arjun walking back to the pavilion. The score is 134-5. The wicket comes on the first ball of 30th over. Bhavya looks like little bit confident. Bhavya on strike. The field looks like little bit defensive. Here again well bowled by Arav and comes up with a single. Arman on strike. Arman is playing on 28 of 35 deliveries. Here's the full toss and the ball is going towards the mid-on. Only single run comes up. A beautiful single by Arman and Bhavya. Overthrow, we can see runs coming up by overthrow extras. Here's the short ball, but the batter misses it. Again, well bowled by Arav. Again, short ball and a dot ball also. And it's 30 overs and 135 for 5. 134 for 5. Here's the new bowler Faizan Sheikh and Arman on strike. Here's the
Volleyball. Full volley, sorry. And a single comes up. Arman and Faizan both are brothers facing each other in opposite teams. And Bhavya on strike. Here's the wide ball. Extras. And well kept by Yash. Here's the full volleyball and no run. Well bowled by Faizan. And again it's extra. And it looks like it's going for 4. But I think there will be only 2 runs. Good running between wickets by Arman and Bhavya. Here is the short ball and a dot ball also. And again it's a dot ball. 1 ball to go. And again it's a dot ball. "31 overs done and it's 139 for 5. So thank you, Aryan. It was a good time. A new man learning the curves of commentary. 139 for 5 in 31 overs is where COG Lions have come up till now. It is going to be once again persisting with Arav Virajdar for his 4th over. The 32nd of the innings. Wide, meanwhile, comes along the extra. Comes along to start off the over number 32. Tries to sweep and sweeps it to a good effect. But there is a fielder patrolling the fence. Will pick it up and will just keep it down to 1. Down to 1 and this time straight back over the bowler's head. There is a fielder in long off region. Will pick it up. Will pick it up and throw towards the bowler. Meanwhile, another single. Once again, cleans him up. Cleans him up and another wicket. Another wicket and the big wicket of Arman has been picked up by that man Arav Virajdar. The 6th wicket goes down at a score of 142 and he was looking good. He was looking good and he was looking good towards that half century. Arman, but Arav Virajdar, the second bowler in the wickets column after Chetan Lamani. The 6th wicket goes down and the big wicket of Arman Sheikh getting out for 31 of 39 deliveries has been the highest scorer up till now and invokes the new man.
Inbox Ronak Naik. Ronak Naik, the new man, the man hailing from Gujarat, is a good looking prospect. Cleans him up as we see Arman walking inside the dressing room. Said, फालतू बॉल था वो, मारना चाहिए था. This is the mindset always of Arman. Looks to put every ball out of the ground. Next delivery. Raunak playing that ball and getting results out of it is the most important thing. Bhavya now on strike. Dot ball. Raunak batting on strike. 1 of 1. So sums up the over with a dot after the completion of 32 overs. It is 143 for the loss of 6. And now on strike will be Bhavya. Bhavya on strike. In comes the new bowler. In comes the new bowler. In comes back on Ansh. First ball appeal, but the umpire says might be a bat. Might be a bat. No reaction from the umpires of giving, no intentions rather of giving that of the leg bias. Next delivery, beating the batter all in stop around Ganaik on strike now. So Raunak Naik also departs, and the first wicket for that man, for his hard efforts, Ansh Harmalkar. Raunak Naik, who has walked back to the pavilion. 144 for the loss of 7. So the new man walking in is just walking in, the new man. Rudra Gaus
was hit on the helmet earlier, has walked in. This time, a good looking shot. Bhavya Chandok and Rudra Gaus, two batters out in the center. This time, down the leg, wide is the signal from the umpire. So another extra adds to the tally. 145 for the loss of 7 in the 33rd over. This time once again, played down the ground, looking for that single, I guess. Rudra Gaus now needs to get his timing proper. Good looking shot down the ground, but straight to the man. Will be a dot ball. Well, Rudra is now looking pretty comfortable. And after the completion of 33 overs, it is 145 for the loss of 7. So start of the 34th, it is going to be with Abhishek Lamani into his 6th over. This time once again playing with the soft hand, Bhavya Chandok. Single is bound to be getting by Bhavya Chandok because he knows he's a new man in. Bhavya plays it, running for a single, yes, quick running between the wickets, a throw, shattering the stumps, but Bhavya was well within his crease until the ball has hit the stumps. Rudra Gaus back on strike, 147 for the loss of 7 are COG Lions. Abhishek Lamani back on his bowling mark. Down the ground goes Rudra Gaus. Will be another single. The players are looking tired because lot of it and bright sunshine inside the ground. This time a good looking shot. Good looking shot from that man, Rudra Gaus. This time ball keeping a bit low and will be a single. Overthrows, but will not affect much. Single. Bhavya Chandok now on strike. A pitch up and over the infield. The fielder doing well, was committed at the wrong side. The fielder but getting to a hand to it and stopping that ball and allowing the batters to just camp for one. After 34 overs, it is 149 for the loss of 7. And Rudra Gaus batting on 5 of 30 deliveries and Bhavya Chandok batting on 7 of 16 deliveries is the situation right now. So 16 overs to go from here on, and where this total is hailing is needs to be seen.
First ball of the 35th over, played down the ground. Ansh Harmalkar, rather it is Chetan Lamani who is being brought into the attack. 7th over for Chetan Lamani, 35 runs for 3 wickets and 3 quality wickets up front. $150 for the loss of 7. This time once again showing the full face of the bat, same fielder fielding the ball, will be another dot. Decent spell by Chetan Lamani. This time the ball keeping low and too much low, and the keeper collecting the ball almost as it was rolling on the ground. Wide is the signal from the umpire. So meanwhile a good looking shot down the ground, fielder trying to shy the stumps but missing the stumps by a whisker, and will be another single. Rather no run has been cultured up on the delivery. 151 for 7. Good looking shot down the ground, but the fielder is there. Chance of run out. Chance of run out, and the keeper has fumbled, and the bowler has his hands on his head because he knew there was a chance of that run out, and the keeper also knew that there was a chance of that run out, but missed by the wicket keeper, and as a result Bhavya Chandog is still on the crease. COG Lions might be looking for these two to get some partnership for them, and they are well and truly on the track of doing so. Rudra Gauss, who went in as an opener, then hurts himself by taking one on helmet, and now has walked in to bat. Once again looking for that big one, ending up getting no bat onto it. A dot ball to sum up the over number 35. After the completion of 35 overs, it is 151 for the loss of 7. COG Lions Junior. Back on with Abhishek Lamani for his seventh over. Abhishek Lamani up against Bhavya. Will be a contest to watch out for. First ball in the air, chance of a catch, just over that fielder, and will be Abhishek Lamani will be thinking, what's going on? Just over that fielder. Couple of runs more. This time once again beating the bat of the batter. He's the man. He's a great-hearted man. Always looks for those wickets. Abhishek Lamani always gives his 100% on the ground. Meanwhile, trying to stop that ball into the follow-through, couldn't do so, giving away a single.
154 rather for the loss of 7 in the 36th over. Long format, this is 50 overs format, and we are not used to this kind of formats. This is the great opportunity given by the organizers to the players to play this format of 50 overs. This time a good looking shot, fielder running behind the ball, will stop by sliding, and meanwhile a couple of runs more. Rudragaus and Bhavya, well, they are both getting in touch now. This time a good looking ball, well stopped in the follow through, was well defended by the batter as well. Good ball, given respect. This time the keeper collects the ball to sum up the over number 36 after the completion of 36 overs. It's 156 for the loss of 7. COG Lions Juniors. First ball of the 37th was a good shot. From that man, Bhavya Chandok. Was straight to the man, starts off with a dot. Bhavya Chandok on strike up against Chetan Lamani. The bowler of the day for the team Banjara Cricket Club today. This time a good looking shot, high, handsome, where it is going, and it is gone. One bounce, well stopped inside the play by Faizan Sheikh. Was a good looking shot. First time I have seen Bhavya Chandok goes aerial in this innings. Couple of runs more to Bhavya Chandok and his side. Once again, clipped on the leg side. There is a fielder there. Will stop that ball. Chetan Lamani into his 8th over, rather. This time, once again, India, there is a protection down there on the boundary. On the backward of point will be another single, and this will bring Rudra Gaus on strike up against Chetan Lamani. Was trying to bowl that slower one, ending up bowling a full toss, but
This time a good looking shot showing the full face of the bat down the ground. Just for a single appeal, afforded appeal by the bowler for the run out, but denied rightfully by the umpire. There has been a good umpiring as well all day along, because in cricket it is said the toughest job is to do is umpiring. So sums up the over number 37 after the completion of 37 overs. It is 162 for the loss of 7, with Bhavya batting on 15 and Rudra Gaurs batting on 8 of 39 deliveries. In comes the bowling partner, the opening partner of the opening bowler, Ritesh Ilegar, for his fifth one. 38th over of the innings, fifth one for Ritesh Ilegar. Starts off single the very first delivery. Now he goes aerial and finds the fielder. And the eighth one goes down. It's 163 for the loss of 8, and it is Rudra Gaus who is walking back to the pavilion after scoring 8 of 40 deliveries. Rudra Gaus walking back to the pavilion, 163 for the loss of 7. COG Lions Juniors. Hello, Niv batter walking in. Tarak Chittam. If we remember the name Chittam, we will remember one name and remember for good things is Jivan Chittam, the wicket keeper. Batter. His younger brother Tarak Chittam has walked out to bat. How will he perform is needs to be seen. And in the front of the bowler who has just picked up the wicket, Ritesh Ilegar. The ball keeping low, wide is the signal from the umpire. So another extra. With this extra, the score will be moving to 164 for the loss of 8. This time once again played with the soft hand, so played for dot ball. Tarak Chittam on strike, a young kid. Needs to get his cricketing lessons at this age.
Good looking shot and with good style as well. Getting close to the ball, hitting it right under his eyes. Good batting, bit of batting skills. Tarak Chittam might have learned some lessons from Jivan as well. Slower one, well judged. Might have hit it for no runs, but well done to Tarak Chittam, because picking up that slower one is not easy. Riteshi Legar at the other end, bowling a decent spell. This time once again, beating the batter, beating the keeper. The ball is going and gone. For a boundary of the bat of Tarak Chittam, and first runs in the match for wides and a boundary, so 5 runs added. So ball still to go, and wide and a boundary, so another ball to be faced by Tarak Chittam. Slower delivery this time, no bat involved, and dot ball to sum up the over number 38. After the completion of 38 overs, it is 169 for the loss of 8 are the COG Lions juniors. So in comes the bowling change. In comes Ayush Gaukar, who has bowled 2 overs for 10 runs earlier. And in comes in the 39th over. Change in bowling. It is going to be Ayush Gaukar in front of Bhavya, who is batting on 16 of 26. Dot ball, the start of the proceedings in 39th over. Once again a good looking shot, but straight to the man. Another dot. 2 consecutive dots. Good looking shot once again. Pavachandog looking in sublime touch here. Might have faced 29 deliveries for his 16, but missed to play with the tail enders now. Good looking shot. There is bit of misfield by the fielder. Will be a single. Now Tarak Chittam on strike up against Ayush. The battle to watch out for now. How will Tarak Chittam react from here on? What will be the plans in his mind? Was a slower delivery beating Tarak Chittam all ends up. 170 for the loss of 8 is the score. This time Tarak was not having a clue about that delivery. Was a full length delivery, but in the end finally managed to play that ball, but he was searching for that ball where it has gone, but
In the end, picks up a single, sums up the over number 39. After 39, it is 171 for the loss of 8. Tarak Chitam batting on 1 of 6 deliveries, and Bhavya Chandok, it is 17 of 30 deliveries for him. So 11 overs remaining from here on, where the total is heading, it needs to be seen. This time, once again, well defended. Well defended was a full length delivery. He is not backing out. Tarak Chittam. He is facing all the fast bowling that is coming his way. Trying to play that ball. The keeper fumbles. The keeper fumbles and Tarak Chittam, well, has not taken a single, instead at the striking end. This time, once again, beating the bat of Tarak Chittam. Ritesh Degar has done well. Into his 6th over, Ritesh Degar bowled one maiden the first over of the innings. This time played into the leg side region, was easy pickings for Tarak Chittam to play that ball into the leg side and go away for that single. This time once again going down the ground. Bhavya Chandok. Well, he's batting on 17 of 31, but he's playing with the young kid, Tarak Chittam. Oh, played into the, was into the leg side region, the ball, but the face of the bat closing too early, where it didn't go where Bhavya tried to hit it, but sums up the over after the completion of 40. It's 172 for the loss of 8. 10 overs remaining from here on, where the total is hailing. It needs to be seen. 60 deliveries remaining from here. In those 60 deliveries, what will be the target in the minds of the COG Lion Junior? It needs to be seen.
This time appeal. Babachandog. We are into the 41st over. 173 for the loss of 8. Good looking shot. Straight to the man. Picking up a single Babachandog and will be summing up the 41st over after the completion of 41 overs. It is 174 for the loss of 8. And Babachandog batting on 18 of 34. And with his partner Tarak Sittam batting on 3 of 14 deliveries. In comes the bowling change. In comes Ayush Gaukar back on. Babachandog on strike. Ayush. Sorry, it is going to be Anshar Malgar who is bowling the 42nd over. 9 overs from here on where the total is heading. This time the ball keeping low, asking the question, and the umpire, well. He has given him out. The batter was not happy with the decision, but the umpire has raised his finger, and Babachandog is walking back to the pavilion. It's 174 for the loss of 9, and Babachandog has scored 18 of 35 deliveries. Was not happy with the decision of the umpire, but umpire has declared him leg before wicket. LBW. And the last wicket going on the crease, last pair. It is going to be Abir who is walking into the batting arena alongside Tarak Chittam. Bhavya walking back in disguised. First ball beating the batter all ends up. A new batter Abir who just joined Tarak Chittam. This time played under the eyes, trying to shy the stumps, but Abhir was well within his crease. Next delivery from the bowler. This time wrapped on the legs, appeal, but no, says the umpire. Another dot. Abir Prasad. This time once again wrapped on the legs. No, says the umpire. This time Abir play an amaze to sum up the over after the completion of 42 overs. It is 174 for the loss of 9.
So 8 overs remaining from here, where COG Lions are going to hail with the last wicket at the crease. 142 for the loss of 174 for the loss of 9 rather, and it's looking like it's Abhishek Lamani who is going to come back into the attack. Has bowled 7 overs for 22 runs at the economy of 3.14. Has been a decent bowler so far. Has not yet picked up the wicket. Abhishek Lamani will be looking for that as the last pair is batting. Tarak Sitam on strike lets the ball go towards the wicket keeper. Wide is the signal from the umpire. Good looking ball, looking for that single, shy at the keeper's end, uphill. But the square leg umpire denied it. .176 for the loss of 9. Abir on strike up against Abhishek Lamani into his 8th over. 176 on the scoreboard. This time played into that leg side region. Will be a dot. Abhishek Lamani bowling over the stumps into his 8th over so far. Meanwhile, a good looking shot, single, will they turn back for second? Yes, they do. Yes, they do. And a couple of runs more for Abir to open up his tally. Next delivery from Abhishek Lamani. Down the ground, aerial, open over the fielder's head. The ball is racing towards the boundary and it will win the race into the boundary cushions. First boundary for Abir in his innings. Down the ground, over the head of Abhishek Lamani. And he said, I will hit you like an arrow. Down the ground, weight goes into the fence. Abhishek Lamani is still searching for that wicket in the wickets column. Now changing his side, coming round the stumps. This time a good ball, well defended, given the respect. But it's looking like the stumps have shattered. And the first wicket in the wickets column for Abhishek Lamani. Finally, Abhishek Lamani picks up one and sums up the innings for COG Lions Juniors. And the target in front of the Banjara Cricket Club when they come out to bat will be 183 in 50 overs. As they have bundled out the team of COG Lions Juniors in for 182 in the 42.5 overs. And the last wicket picked up by Abhishek Lamani, and he is now in the wickets column. It's 182 for the loss of 10, all out COG Lions. 183 is the target in 50 overs for the team Banjara Cricket Club when they come out to bat in the second innings. Stay tuned, we will be joining you soon with the action of the second innings.
हेलो, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत। नमस्कार, सत श्री अकाल। दूसरा इनिंग्स और 183 रनों की है ज़रूरत। पहली गेंद चौके के साथ पारी की शुरुआत चेतन लमानी, जिन्होंने की गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की शुरुआत करते हुए पहले शॉट के साथ 4 रन बोर्ड पर लगते हुए पहले गेंद पर पहला चौका। और गेंदबाजी में अर्जुन निमिकल शुरुआत करते हुए दूसरी गेंद कैसे कमबैक करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद हल्की सी बाहर निकली पड़ने के बाद डॉट बॉल। अच्छा कमबैक चौके के बाद गेंदबाज का। चौका, उसके बाद डॉट बॉल। आगे क्या होगा दिखने वाली बात रहेगी। इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर से पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई वो गेंद एक बार फिर से डॉट बॉल। तो पहले चौके के बाद 2 लगातार डॉट। अर्जुन निमिकल यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। इस बार लेग स्टंप से बाहर देखना होगा अंपायर की ओर। एक बार फिर से बाउंड्री की ओर तो गेंद जाती दिखी है, देखना होगा। बल्ले के साथ दूसरा चौका। चेतन लमानी डाउन दी लेग जा रही थी वो गेंद, उसको हेल्प कर दिया बाउंड्री की ओर। फाइन लेग की दिशा में मिलेंगे पूरे 4 रन। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ साइड में खेला है, उस गेंद को मिल जाएगा सिंगल। दूसरे के लिए पलटे जरूर बल्लेबाज जरूर। और जी हाँ, 2 रन अभी मुकम्मल। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 चौके उसके बाद 2 रन। अभिषेक लमानी, जिन्होंने कि पहले इनिंग्स का पहला ओवर मेडन डालते हुए अपने गेंदबाजों को देखा था, वही अभिषेक लमानी, अब वही चेतन लमानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शाइन करते हुए। 3 विकेट्स उनके नाम गेंदबाजी करते हुए। और अब पहले ओवर में यहाँ पे 10 रन। दबाव में गेंदबाज। थोड़ा सा रन अप में फंबल करते हुए, स्टेप्स को मिस करते हुए वापस जाएंगे अपने रन अप पर। इस बार खेल दिया है उस गेंद को, पर मिल जाएगा डॉट बॉल। पहले ओवर की होगी समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के, 183 का लक्ष्य। और बंजारा क्रिकेट क्लब अभी भी 173 रनों की जरूरत। इसी के साथ गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी में आते दिखाते हुए अबीर 173 रन अभी भी यहां से हैं बनाने। 1 ओवर में आ चुके हैं 10 रन। पहली गेंद लेग साइड में दिशा से भटके, वाइड का इशारा आया है अंपायर से, तो अतिरिक्त के माध्यम से दूसरे ओवर की शुरुआत। दूसरे ओवर में यश नायक, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे, चेतन लमानी उनके साथ। इस बार बढ़िया गेंद, अपील होती हुई अंपायर कहते हुए जीना। बढ़िया गेंद जरूर थी पर विकेट बॉल नहीं थी।
इस बार बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद, वेल विद इन द गाइडलाइंस ऑफ द वाइड। जी हाँ, लीगल डिलीवरी और बढ़िया फुल लेंथ गेंद वाइड यॉर्कर, जिसके चलते और एक डॉट बॉल जोड़ा जाएगा खाते में। इस बार डाउन द लेग वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर से आता हुआ, तो 1 दर्जन रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए 12 स्कोरबोर्ड पे अभी लग चुके हैं। करंट रन रेट जो है 9 रन पर ओवर। इस बार छोड़ा है इनको वाइड का इशारा एक बार फिर से, तो अतिरिक्त आते रहे इस ओवर में। यहाँ पे 3 अतिरिक्त रन जो है वो दिए जा चुके इस ओवर में। 13 रन यहाँ से कैसे रिएक्ट करेंगे गेंदबाज, क्योंकि कंजिक्यूटिवली 2 वाइड्स जो है डाल चुके हैं। कैसे कमबैक करेंगे गेंदबाज। इस बार डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश पर कट एंड बोल्ड, और जिस फैशन में गिरा था आर्यन चौगुले का विकेट, उसी फैशन में गिरते हुए बंजारा क्रिकेट क्लब का पहला विकेट। और आउट होने वाले बल्लेबाज यश नाइक। दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज सेम फैशन में बैक टू द पवेलियन। फर्स्ट इनिंग्स में जाते देखा था आर्यन चौगुले कट एंड बोल्ड, दूसरे इनिंग्स में जाते हुए देखते हुए यश नायक कट एंड बोल्ड। तो फिलहाल 13 पे 1 बंजारा क्रिकेट क्लब। नए बल्लेबाज जो कि साथ देंगे चेतन लमानी का, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने जाते हुए। रेहान उगाली एक बेहतरीन बल्लेबाज रेहान उगाली, और इसी बीच बढ़िया गेंदबाजी भी करते हुए यहाँ पे अबीर अभी भी 170 रन यहाँ से है बनाने। रेहान उगाली स्ट्राइक पे। छोड़ा है उस गेंद को और एक डॉट बॉल। तो विकेट्स के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है गेंदबाज अबीर का, लगातार 2 डॉट बॉल्स डालते हुए। पहले वाइड्स 3 रन कंसीड किए थे, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी 1 विकेट, और जैसे ही देखा नए बल्लेबाज रेहान उगाली को आते हुए 2 लगातार डॉट बॉल्स। इस बार ऑफसाइड में खेला है पॉइंट के रीजन में, और एक आ जाएगा डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ 2 ओवर्स की होगी समाप्ति। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 13 पे 1 बंजारा क्रिकेट क्लब। यश नाइक का विकेट इस ओवर में अबीर के नाम, और बल्लेबाजी फिलहाल चेतन लमानी जो कि खेलते हुए 10 रन बनाकर 6 गेंदों में 2 चौकों का समावेश, जिसमें और नए बल्लेबाज रेहान उगाली जिन्होंने कि 3 गेंदों का सामना किया है, अभी भी खाता खोला नहीं है, और लगातार दूसरा ओवर डालते हुए अर्जुन। पारी का तीसरा और खुद का दूसरा ओवर लेकर अर्जुन। इस बार बढ़िया शॉट, व्हाट अ शॉट, लेग साइड पिकअप और डिपॉजिटेड, एक बाउंस बाउंड्री के पार मिल जाएंगे पूरे 4। इस चौके के साथ सप्लाइम फॉर्म कंटिन्यू करते हुए चेतन लमानी पहुंच जाएंगे 14 पे, स्कोर को पहुंचा देंगे 17 पे। तो दबा हुआ हट्टा हुआ, जैसे पहली गेंद आई
पहली गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाद, कहा वेलकम टू द क्रीज विथ योर सेकेंड ओवर अर्जुन। इस बार बल्ले को किया है बीट, अच्छा कमबैक किया है। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरे गेंद पर डॉट, अच्छा कमबैक वहां पे 17 पे 1। चेतन लमानी खेलते हुए 14 पे। अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, उस गेंद को छोड़ा जाने दिया, बेहतरीन गेंद थी, थोड़ी सी उछली पिच होने के बाद। चेतन लमानी अच्छी गेंदों को सम्मान, बुरी गेंदों को ग्राउंड के बाहर, ये रहा है अब तक का हाल। अगली गेंद, इस बार डिफेंसिव शॉट, डिफेंस दिखाते हुए, पर मिल जाएगा सिंगल। थोड़े से फील्डर स्लो थे, उसका फायदा उठाया और मिल जाएगा सिंगल। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच जाएगा 18 पे। चेतन लमानी पहुंच जाएंगे 15 पे। रेहान उगाली अब होंगे स्ट्राइक पे। देखना होगा रेहान उगाली यहां से क्या करते हैं बचे हुए गेंदों में इस तीसरे ओवर के। 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार रेहान ने खेल दिया, फील्डर तैनात, डॉट बॉल मिल जाएगा। इस बार थोड़ी सी उछली हो गई ना, डिफेंस किया रेहान उगाली ने और ओवर की होगी समाप्ति। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से आए 5 रन। तीन ओवर्स की समाप्ति, 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 18 रन। तो अभी भी 165 रनों की जरूरत बचे हुए 47 यानी कि 282 गेंदों में 165 रनों की जरूरत। करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 6 रन प्रति ओवर एक करंट रन रेट। डकवर्थ लुईस के हिसाब से अगर हम जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है, अर्ली रेनी सीजन है, तो 1 रन पीछे बल्लेबाजी टीम डकवर्थ लुईस के हिसाब से। चेतन लमानी जो कि स्ट्राइक पे सामना करते हुए अभीर का। इस बार बढ़िया गेंद, एक बार फिर से अभीर अच्छी गेंदबाजी करते हुए। लगातार 2 डॉट बॉल्स इस चौथे ओवर में। अभीर की अगर बात की जाए तो एक्सप्रेस नहीं है, पर लाइन एंड लाइन पे रिलाई करते हैं ज़रूर। इस बार छोड़ा है, उस गेंद को बाहर जा रही थी पीछे होने के बाद। लगातार 3 बेहतरीन गेंदे। चेतन लमानी जानते अच्छी गेंदबाजी कर रहे, अच्छे लाइन एंड लेंस को हिट कर रहे हैं, जाने दे रहे उस गेंदों को, क्योंकि जानते हैं बड़ा लंबा फॉर्मेट है, 50 ओवर का फॉर्मेट है और 160 के आसपास रन चेज करने हैं, तो टाइम है और टाइम ले सकते हैं। सेट होकर अगर बल्लेबाजी करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और उसी की कोशिश यहाँ पे की जा रही है।
4 लगातार डॉट गेंदे ले चुके इस ओवर में। इस बार थोड़ा सा उछाल, बल्ले को किया है बीट और डॉट बॉल के साथ आगे बढ़ेगा इस ओवर में कारवा। अब तक 5 गेंदे डॉट इस ओवर में। चेतन लमानी जो कि एग्रेसिव दिखे थे शुरुआती ओवर्स में। इस बार छोड़ा जाने दिया उस गेंद को, अंपायर की ओर निगाहें, मेडन ओवर जाता हुआ। और अभी की स्टैट्स की अगर हम बात करें तो 2 ओवर्स 1 मेडन 3 रन 1 विकेट, ये है अब तक के स्टैट्स अभीर के लिए। तो 4 ओवर्स की समाप्ति, 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद 18 पे 1, अभी भी 276 गेंदे, 276 गेंदों में बनाने हैं 163 रन। इसी बीच 5वां ओवर, पारी का 5वां ओवर, और पारी का 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से अर्जुन। तो तीसरा ओवर उनके लिए और पारी का 5वां ओवर। अब तक अगर ये पार्टनरशिप की बात की जाए तो 5 रन 15 गेंदों में ये पार्टनरशिप है। इस बार कट किया उस गेंद को, फील्डर तैनात कर लेंगे स्टॉप उस गेंद को। ध्यान उगाली अब तक खेल चुके 6 गेंदे। अब तक खेल चुके 6 गेंदे, खाता नहीं अब तक खुला है। इस बार हवाई फायर देखना होगा कहां तक जाएगी वो गेंद, और जाएगी बाउंड्री पार देकर जाएगी पूरे 4, और रेहान उगाली के लिए पहले रन इस मैच में। 7वें गेंद पर आए पहले रन, और वो भी चौके के साथ किए शुरुआत। पांचवा ओवर जो कि प्रगति पर। थोड़ा सा राउंड अप में फंबल एक बार फिर से गेंदबाज द्वारा, तो फिर से एक बार रिलोड करना पड़ेगा। एक बार फिर से थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, टॉप एज, फील्डर से दूर, मिल जाएगा सिंगल। फॉर्चुनेट रहे रेहान कि फील्डर से थोड़ा सा दूर वो गेंद रही। एक बार फिर से 23 रन स्कोरबोर्ड पे। पांचवा ओवर जो कि प्रगति पर। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, अनइवन बाउंस की जो मैं बात कर रहा था वो दिखाई देता हुआ। पिछली गेंद सर्टेनली क्लाइंब हुई और ये गेंद नीचे रहती हुई, और एक डॉट बॉल आ जाएगा। स्ट्राइक पे रह जाएंगे चेतन लमानी। अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी एक बार फिर से उठी हो गेंद गुडलैंड स्पॉट से, और मिस कर गए उस गेंद को। जानते हैं मारने वाली गेंद थी, कट करना चाहते थे पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल एक बार फिर से आ जाएगी, और चेतन फॉर्म में तो है पर देख कर खेलना होगा, मेरिट पर खेलना होगा गेंदों को। एक बार फिर से पैरों से टकराई है गेंद, हल्की सी अपील पर उसको नकारा है अंपायर ने, तो और एक डॉट बॉल आ जाएगा। पांचवा ओवर प्रगति पर अब तक लग चुके स्कोरबोर्ड पर 23, 1 विकेट के नुकसान पर।
5 ओवर्स की समाप्ति। 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे अभी भी 160 रनों की जरूरत है यहाँ से 45 ओवर्स में। छठा ओवर, रेहान उगाली एक बार फिर से स्ट्राइक पर अमीर प्रसाद गेंदबाजी करते हुए 160 रन अभी भी यहां से है बनाने। अभी अच्छी गेंदबाजी रही अब तक। तीसरे ओवर में एक मेडन डाल चुके हैं, सिर्फ 3 रन दिए, 1 विकेट प्राइस विकेट यश का निकाल चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ी सी नीचे रही हो गए ना, रेहान खेलना चाहते थे पर खेला ऑफसाइड में। फील्ड लगाई हुई जिस हिसाब से फील्ड लगाई है उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए अबीर छठा ओवर है इस पारी का। 160 यहाँ से जानते हैं ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, सेट होने के लिए टाइम है। इस बार बढ़िया गेंद, फील्डर तैनात। रेहान एक बार फिर से सिंगल को डिनाइड करते हुए 11 गेंदें खेल चुके हैं, 5 रन 1 चौका उसमें शामिल। अगली गेंद इस बार छोड़ दिया, जाने दिया उस गेंद को। ऑक्सटम को देखा, जांचा परखा और जाने दिया उस गेंद को। और एक डॉट बॉल आ जाएगा। छठा ओवर बेहतरीन अब तक रहा है इस ओवर में, खासे रन निकाले नहीं गए हैं बल्लेबाजों द्वारा, मैं कहूँगा। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया उस गेंद को रेहान ने और एक डॉट बॉल आ जाएगा। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, रन आउट का मौका पर मेरे ख्याल से सेफ थे बल्लेबाज। और जी हाँ, और मैं देखना चाहूँगा जिस फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया उस का गेंदबाजी का नंबर कब आएगा, क्योंकि एक बढ़िया ऑलराउंडर अपने टीम के लिए साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, अंततः खुश नहीं थे अपने विकेट जिस तरह से गिरी। फिलहाल 6 ओवर्स की समाप्ति। 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद 24 पर एक अभी भी 159 रनों की जरूरत यहाँ से। इस बार दिशा से भटके, वाइड का इशारा आया है अंपायर से, तो और एक गेंदबाजी में पहला बदलाव प्रचित आते दिखे गेंदबाजी में। आते 7वां ओवर और पहला बदलाव गेंदबाजी में प्रचित 25 पे 1। एक बार फिर से सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, सम्मान दिया, फ्रंट फुट डिफेंस दिखाते हुए रेहान। अगली गेंद इस बार लेग साइड इस गेंद थी, खेल
हेल्प कर दिया उस गेंद को, बाउंड्री की ओर आती हुई गेंद, फील्डर अच्छा बचा वहां पे, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। निश्चित रूप से तालियां बजनी चाहिए उस फील्डिंग एफर्ट के लिए, पर इसी बीच मिल जाएंगे 2 रन रेहान गाली। तो आते आते 2 रन 8 रनों पे खेलते हुए 16 गेंदों में। इस बार बढ़िया शॉट, अरमान वहां पे तैनात, सोच रहे होंगे मनी मन में मेरी गेंदबाजी का मौका कब आएगा। प्रचीत अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंद 3 रन अब तक दे चुके हैं। सामने है रेहान, देखना होगा क्या करते हैं। इस बार फुल टॉस, हेल्प कर दिया उस गेंद को लेग साइड में, गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर, अंततः मिल जाएगा सिंगल। रेहान जाएंगे ऑफ स्ट्राइक पर, अब आएंगे चेतन लमानी जो कि स्ट्राइकिंग एंड पे अच्छे फॉर्म में दिखे, क्या करेंगे इस नए गेंदबाज के खिलाफ। इस बार ऑफ साइड में खेल दिया उस गेंद को, वहां पे प्रोटेक्शन तैनात, मिल जाएगा सिंगल। तो सिंगल इसी तरह से खेलना होगा, सिंगल डबल्स बीच में ऑड बाउंड्री, और आप टारगेट की ओर अग्रसर दिखाई दे सकते हैं, पर विकेट्स को संभाले रखना होगा। इन दोनों को अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी। अब तक इस पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो 16 रन 32 गेंदों में। इस बार बढ़िया शॉट ऑफ साइड में, कवर ड्राइव का मुजाहरा, दूसरे रन के लिए भागने की कोशिश, रन आउट का मौका, सुसाइडल विकेट मैं कहूंगा। दोनों बल्लेबाज एक एंड पे, पता ही नहीं था कि रेहान गाली क्या चाहते थे, और बीच में अंपायर की ओर निगाहें रहेंगी। 4 रन इसी बीच आते दिखाई देते हुए, ऐसे दिखा कि 2 रन भागने की कोशिश थी, पर बल्लेबाज को पता था कि गेंद चौके के लिए बाहर जाएगी। 33 रन एक विकेट के नुकसान पे 7 ओवर्स के बाद। जिस तरह से भाग रहे थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने शॉट के लिए, दूसरा रन भागने की पूरी कोशिश, पर फील्ड जो कि पावर प्ले चल रहा है, पर इसी वजह से इनसाइड द 30 सर्कल बाउंड्री को क्लियर करती हुई गेंद। इसी बीच 7 ओवर्स की समाप्ति, 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पे, और अभी भी 150 रनों की जरूरत। 20 रन की पार्टनरशिप 33 गेंदों में, और जिस गेंदबाज की मैं बात कर रहा था अरमान शेख, उसका आगमन होता हुआ बॉलिंग मार्क पर। पहली गेंद डॉट बॉल, आठवां ओवर। इस बार थोड़ा सा पिच के राउल शॉट को ऊपर, गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर, देखना होगा, पर अच्छा से वहां पे बाउंड्री को सेव किया। इसी बीच 2 रन मुकम्मल। अरमान शेख अब 2 गेंदे डाल चुके हैं, 2 रन दे चुके हैं, स्ट्राइक पे रहेंगे चेतन।
जी हाँ, शॉर्ट बॉल उसको पुल कर दिया है चेतन, अरमान के हाथ, सर पे अंपायर का सिग्नल, चौका। तो इस ओवर में अब रन आना शुरू हो गया है। जिस तरह का हिटिंग लेटर स्टेजिस में अरमान ने दिखाया था, उस तरह का हिटिंग चेतन लमानी अपने उनके पहले ओवर में उनको दिखाते हुए पहला चौका अरमान के बॉलिंग एनालिसिस में। और चेतन लमानी की अगर बात की जाए तो प्रीटी गुड स्कोरिंग रेट, 22 रन मात्र 23 गेंदों में, 6 छक्के उसमें शामिल। इस बार छोड़ा जाने दिया उस गेंद को, वाइड का इशारा एक बार फिर से अंपायर से आता हुआ, तो और एक अतिरिक्त के माध्यम से रन जोड़ा जाता हुआ। एक क्लियर माइंडसेट दिखाई देता हुआ अरमान का कि हिटिंग आग से दूर रखा जाए चेतन लमानी के, क्योंकि जानते हैं चेतन लमानी एक अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। फुल टॉस एक बार फिर से लेग साइड में खेल दिया, उस गेंद को देखना होगा, मिल जाएगा सिंगल, फिर भी आ जाएगा एक रन। ऑफ स्ट्राइक रहेंगे चेतन लमानी, तो स्ट्राइक पे आ जाएंगे रेहान, वो भी एक बढ़िया बल्लेबाज। इस तरह से अगर रन्स को लीक करेंगे, पहले एक छोटा टारगेट उसके ऊपर आप ऐसी गेंदबाजी अगर करोगे तो मैच में कहीं ना कहीं से बल्लेबाजी की टीम को आप कमबैक करवाओगे। छोटी गेंद, रूम दिया और रूम को एक्सेप्ट किया रेहान उगाली, और एक चौका पाया। तो एक तरफ हुआ और एक तरफ खाई। अगर चेतन ऑफ स्ट्राइक रहेंगे तो स्ट्राइक पे आ जाएंगे रेहान, उन्होंने भी दे दिया है चौका। तो इस ओवर का दूसरा चौका, करे तो करे क्या अरमान शेख। करे तो करे क्या, स्कोर पहुंच चुका है 45। 138 रनों की जरूरत यहां से मैच जीतने के लिए। इस बार सम्मान दिया उस गेंद को, बढ़िया गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी। ओवर की समाप्ति डॉट के साथ, पर फिर भी आए 12 रन इस ओवर से। तो 8 ओवर्स की समाप्ति, 8 ओवर्स की समाप्ति के बाद 45 फॉर द लॉस ऑफ 1, और अभी भी 138 यानी कि 138 रन इन 252 बॉल्स, ये है ज़रूरत अगर बंजारा क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो। अगला ओवर, फिर से एक बार छोटी गेंद, उसको खेल दिया लेग साइड में, मिल जाएंगे पूरे 4। चेतन लमानी ने कहा वेलकम टू द क्रीज विथ अ बाउंड्री। 9वें ओवर की शुरुआत चौके के साथ। वेलकम टू द क्रीज का चौके के साथ। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, उसको सम्मान दिया पॉइंट के रीजन में, फील्डर तैनात वहां पे फील्ड किया है उस गेंद को, डॉट बॉल आ जाएगा। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, सिंगल, और इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे बंजारा क्रिकेट क्लब 9वें ओवर में 50 पे 1 स्कोरबोर्ड पे लगता हुआ, और अभी भी 133 रनों की जरूरत यहां से मैच जीतने के लिए।
एक बार फिर से बढ़िया शॉट, फील्डर तैनात, डॉट बॉल आ जाएगा। रेहान 17 पे बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 3 चौके उसमें शामिल। चेतन की अगर बात की जाए 28 रन 27 गेंदों में 5 चौके उसमें शामिल। प्रचित अपना दूसरा ओवर 14 रन दे चुके हैं अब तक। इस बार लेग साइड में गेंद थी, खेलना चाहते थे, चूके उस गेंद से। गेंद को मारना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना अक्सर कि अच्छी गेंदें भी रन्स खा जाती है, बुरी गेंदे से आप बच जाते हो। तो उसी तरह का कुछ हाल हुआ इस गेंद पे। एक बार फिर से खेला है उस गेंद को ऑफ साइड में। तो 9 ओवर्स की समाप्ति, 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद 50 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 133 रनों की जरूरत 246 गेंदों में। 10वां ओवर आते आते और गेंदबाजी में देखना होगा कौन आते हुए। तारक चित्तम की एंट्री होती हुई गेंदबाजी में। 10वां ओवर गेंदबाजी में बदलाव, तारक चित्तम गेंदबाजी के मोर्चे पर। दूर वाले छोर से तारक चित्तम का आगमन होता हुआ स्ट्राइक पे रहेंगे। चेतन छोटी गेंद, पहले गेंद पर तारक चित्तम की शुरुआत चौके के साथ। उम्र में मेरे ख्याल से सबसे छोटे खिलाड़ी इस टीम में, छोटी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए और वेल सेट बल्लेबाज चेतन लमानी उस गेंद को बख्शते नहीं, पहुंचा देते हैं बाउंड्री के पार, देकर जाएंगे पूरे 4 रन। तो 10वें ओवर की शुरुआत आते आते चौके के साथ। चार रन पर निराश नहीं होना होगा। तारक चित्तम बेहतर करते जाना होगा अपने गेंदबाजी एनालिसिस को और अपने लाइन एंड लेंस को। एक बार फिर से फुल टॉस, लेकिन डिफेंसिवली खेला है उस गेंद को। जानते हैं बड़े रन्स का पीछा नहीं कर रहे, टाइम ले सकते हैं, और उसी तरह का कुछ क्रिकेट दिखाई देता हुआ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब तक पार्टनरशिप साझेदारी की अगर बात की जाए तो 41 रन्स की हो चुकी है। एक बार फिर से स्लो ओवर 1, गति में परिवर्तन किया था, इनसाइड हाफ ऑफ द बैट लगा, मिल जाएगा फिर से एक बार सिंगल, तो स्कोर पहुंच जाएगा 55 रन। 1 विकेट के नुकसान पे। रेहान बल्लेबाजी करते हुए 17 के योग पे, चेतन बल्लेबाजी करते हुए 33 के योग पे। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, सम्मान दिया उस गेंद को, डॉट बॉल। करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो 5.69 के औसत से रन बनाती हुए बंजारा क्रिकेट क्लब की टीम। एक बार फिर से फुल टॉस, उस गेंद को खेल दिया है लेग साइड में, थोड़ा सा फंबल फील्डर द्वारा मिल जाएगा, पर फिर भी सिंगल और 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोर बुक में, तो पहुंच जाएगा 56 रन 56 रन के योग पर। चेतन लमानी अब आते हुए स्ट्राइक पे। बढ़िया गेंद, छोड़ा जाने दिया उस गेंद को। ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ। 10 ओवर्स की समाप्ति, 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद 56, 1 विकेट के नुकसान पर।
तो 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद 56 रन एक विकेट के नुकसान पर, और 11 ओवर डालने के लिए गेंदबाज एक बार फिर से दिखाई देते हुए। गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से गेंदबाज पहली गेंद खेल दिया ऑफ साइड के रीजन में, डॉट बॉल। अरमान शेख 11वां ओवर लेकर अपनी टीम की ओर से, और खुद का दूसरा। इस बार छोड़ा जाने दिया उस गेंद को, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, तो और एक अतिरिक्त रन जोड़ा जाता हुआ स्कोर बुक में। स्कोर पहुंचता हुआ 57 रन। करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 5.61 का औसत, और रिक्वायर्ड रन रेट उससे काफ़ी नीचे 3.16। छोटी गेंद इस बार खेल दिया था, और ऐसा लगता है अपील तो हुई थी ज़रूर, पर न जाने किस बात के लिए थी। ध्यान उबाली अभी भी क्रीज पर मौजूद। छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, फील्डर वहां पे तैनात। एक बढ़िया शॉट जरूर रेहान द्वारा, पर मिल जाएगा सिंगल, और इस सिंगल के साथ 58 पे पहुंच जाएगा स्कोर 11वें ओवर में। अब तक 3 गेंदें इस ओवर में डाली जा चुकी है। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, किसी तरह से जाने दिया उस गेंद को, और एक डॉट बॉल जोड़ा जाता हुआ स्कोर बुक में। तो बढ़िया ओवर अब तक के लंच के बाद रेहान का, माफ कीजिएगा अरमान का ओवर अब तक बढ़िया। हर एक वो सवाल पूछने में सफल रहे हैं जो पूछना चाहते हैं बल्लेबाजों से। इस बार स्लोवर वन की कोशिश, गति में परिवर्तन, फुल टॉस पर एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का, और पहला छक्का इस पारी का, और वो भी आता हुआ बल्ले से चेतन लमानी। एक सदी हुई गेंदबाजी, उसके बाद एक बल्ले के साथ सदा हुआ परफॉर्मेंस। अब तक आज का दिन बढ़िया रहा है इस खिलाड़ी के लिए। 39 के व्यक्तिगत योग पे पहुंचते हुए इस छक्के के साथ चेतन लमानी 33 गेंदों का मात्र सामना किया है, 6 चौके 1 छक्का, 118.18 की औसत से रन बनाते हुए। इस बार छोड़ा जाने दिया उस गेंद को। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर्स की समाप्ति के बाद 164 पर 1 चेस में बंजारा क्रिकेट क्लब।
इसी बीच गेंदबाजी में बदलाव, चेतन लमानी जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर स्ट्राइक पर 39 रन बनाकर खेलते हुए, उन्हीं के साथ 19 रनों का योगदान रेहान हुबाली की ओर से भी 51 रनों की ये पार्टनरशिप मात्र 57 गेंदों में आती हुई। इस बार खेला है उस गेंद को ऑफ साइड में और गेंदबाजी में बदलाव दिखाई देता हुआ। सांच पहले स्पिन ऑप्शन को अपनाया गया है, हालांकि कीपर है, विकेट कीपर है, पर कभी कभार गेंदबाजी भी कर लेते हैं सांझ। इस बार बढ़िया गेंद, टर्न हुआ बाहर की तरफ, कीपर से भी मिस, बल्ले से भी मिस, पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, तो और 2 रन मेरे ख्याल से जोड़े जा सकते हैं इस स्कोरबोर्ड में। सड़सठ 66 पे पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार बढ़िया गेंद सांझ की, छोड़ा जाने दिया बल्लेबाज ने। 117 रन यहाँ से मात्र है बनाने। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी फील्डिंग भी वहाँ पे, डाइविंग एफर्ट ऑफ साइड पे इनर रिंग में। इस बार फ्लाइटेड गेंद, खेल लिया इस गेंद को, फील्डर तैनात करते हुए फील्डिंग, डॉट बॉल। एक बार फिर से 67 फॉर 1 12वें ओवर में। इस बार एक बार फिर से छोड़ा उस गेंद को अंपायर की ओर, देखा गेंदबाज ने जैसे वो गेंद की, सांच एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बढ़िया फील्डिंग, अरमान जो कि फील्डिंग करते हुए। बारह ओवर्स की समाप्ति, 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 67 फॉर द लॉस ऑफ 1 और 116 रन यहाँ से है बनाने, अगर बंजारा क्रिकेट क्लब को ये मैच यहाँ से है जीतना। और अहम कड़ी ये 2 बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी करते हुए, चेतन लमानी और उन्हीं के साथ रेहान हुबाली जो कि बल्लेबाजी करते हुए व्यक्तिगत 39 और 19 रन के योग पर। एक बार फिर से गेंदबाजी में आगमन, अरमान शेख 13वां ओवर, खुद का 3रा ओवर। अरमान क्या करेंगे, 20 रन खर्चे हैं अपने 2 ओवर्स में अरमान की अगर बात की जाए तो। इस बार पटकी हुई गेंद, पुल शॉट, फील्डर वहां पे तैनात, बाउंड्री राइडर पिकअप करते, थ्रो करते, तब तक मिल जाएंगे। रन्स वहां पे 68 पे पहुंचाएगा स्कोर। अगली गेंद, इस बार फिर से और एक बार छोटी गेंद, इस बार मिस करते हुए बल्ले को, डॉट बॉल। 13वां ओवर, यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये कारवा, देखने वाली बात रहेगी। 115 यहाँ से और बनाने हैं, देखना होगा कहाँ तक पहुँचाएंगे ये दोनों, खास करके अपने टीम को। इस बार खेलना चाहते थे प्ले एंड मिस अपील, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं,
डॉट बॉल और एक आता दिखता हुआ बीच मैदान में। 68 पे रुका हुआ स्कोर, काफ़ी देर से सिंगल्स और डबल्स पे कैपिटलाइज करना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। अगर यहाँ से कहीं ना कहीं ये दोनों सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलके टीम को जीत की ओर लेकर जाएंगे। इस बार सम्मान दिया उस गेंद को, खेला बैकफुट पे, मिल जाएगा सिंगल। 69 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार हल्के हाथों से खेला, उस गेंद को सिंगल लेना चाहते थे लेकिन ना का नॉन स्ट्राइक करने। और 13 ओवर्स की समाप्ति। 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद 69 यानी कि 69 पर एक बंजारा क्रिकेट क्लब अभी भी यहाँ से 114 रनों की ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से ऑफ स्पिनर से आगे बढ़ेगा इस ओवर में कारवा सांझ का आगमन होता हुआ। एक बार फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर सांझ खेला है लेग साइड में, फील्डर वहां पे तैनात। मिल जाएगा डॉट बॉल। 4वां ओवर यानी कि मिडिल ओवर्स की फेज की शुरुआत। 40 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी करते हुए चेतन लमानी। 13.1 ओवर्स 69। इस बार छोड़ा जाने दिया, कीपर तक गेंद ने सफर तय किया। बढ़िया ओवर अब तक के सांझ का। 1 रन, उसके बाद 2 डॉट बॉल्स। इस बार कट करना चाहते थे, वाइड की मांग भी, और जी हाँ बिल्कुल अंपायर कहते हुए जी हाँ वाइड बॉल। और एक अतिरिक्त रन जोड़ा जाता हुआ और एक कदम जीत की ओर अग्रसर करते हुए बंजारा क्रिकेट क्लब 70 पे पहुंच चुकी है। इस बार भी छोड़ा जाने दिया। एक बार फिर से अंपायर ने अपनी बाहें खोली, वाइड का इशारा एक बार फिर से। तो सांझ को कहीं ना कहीं से अपनी लाइन एंड लेंथ को ढूंढना होगा, कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, विकेट्स के लिए जाना होगा। इस बार हवाई फायर देखना होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। एक बेहतरीन कैच बाउंड्री पर, और इसके साथ ही दूसरा विकेट, और विकेट भी किसका, चेतन लमानी वापस डगआउट 40 रन बनाकर 45 गेंदों में, और एक छक्का और 6 चौकों के साथ ये बेहतरीन पारी होती हुई समाप्त। 40 रन चेतन लमानी के नाम। तो सांझ को हम एक पार्ट टाइमर जरूर कहते हैं, पर एक फुल टाइम विकेट कीपर उसके साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं। सांझ पर आते आते अपने दूसरे ओवर में विकेट छटकाया, और सबसे बड़ा विकेट अगर इस समय पे किसी का होता तो होता चेतन लमानी का, और वो छटकाया है अभी सांझ ने। तो गोल्डन आर्म साबित हुए अपने टीम के लिए। 1.4 ओवर्स 5 रन, उसमें 1 विकेट।
नए बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी करने उतरे हैं, सदानंद लमानी। चेतन लमानी के आउट होने के बाद सदानंद लमानी बल्लेबाजी करने उतरे हैं। देखना होगा क्या सदानंद कंटिन्यू कर पाएंगे जहां से लेफ्ट ऑफ किया था चेतन ने। ऑफ साइड में बढ़िया शॉट पर फील्डर देना, थोड़ा सा फंबल, रन आउट का मौका बढ़ रहा, एक वेवर थ्रो जहां तक पहुंच नहीं पाते आर्यन छोगुले, छोटे से कद के विकेट कीपर, उनके बहुत ऊपर से निकली वो गेंद और जहाँ पे एक रन होना चाहिए था वहाँ पे एक्स्ट्राज ओवर थ्रोज को नहीं रख पाए। इसी बीच सांझ की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, डिफेंसिवली खेला उस गेंद को। ओवर की होगी समाप्ति, 14 ओवर्स की समाप्ति के बाद 73 पे 2। बंजारा क्रिकेट क्लब अभी भी 110 रनों की जरूरत 216 गेंदों में। देखिए ये सोचना समझना होगा इन बल्लेबाजों को कि गेंदें तो बहुत बड़ी है, जितना स्कोर है उतने से डबल गेंदें हमारे पास है। सिर्फ अपने आप को अप्लाई करके एक गेम खेलने की ज़रूरत। यहाँ से 110 रन यहाँ से बनाने, 73 तो स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 15 ओवर दूर वाले छोर से गेंदबाजी में बदलाव एक बार फिर से दिखाई देता हुआ। गेंदबाजी अब कौन करेगा, देखने वाली बात रहेगी। ऐसा लगता है कि रौनक आते हुए गेंदबाजी करने के लिए, रौनक नायक कुरचरम से हेल करता है खिलाड़ी सावडेमेरिया से और बहुत अच्छा एक ऑलराउंडर कहलाता है। तो देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेगा। बल्लेबाजी में तो खासा कुछ कर नहीं पाया है, पर किस तरह का कॉन्फिडेंस लाएगा गेंदबाजी में, देखने वाली बात रहेगी। पहली गेंद बढ़िया गेंद, पलक झपकती हो गेंद निकल गई विकेट कीपर तक। डॉट बॉल से शुरुआत अपने स्पेल की। रेहान बाली का भी देखना पड़ेगा किस तरह का रूप इनके सामने इख्तियार करते। फिलहाल तो 2 गेंदे डॉट खेल चुके हैं। मुझे लगता है कि डॉट गेंदे खेलने से कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला बल्लेबाजी टीम पर, क्योंकि जानते हैं बहुत टारगेट छोटा है, दुगनी गेंदे बड़ी है टारगेट से, तो डॉट बॉल्स कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ विकेट्स की दरकार रहेगी गेंदबाजी टीम को। इस बार हल्के हाथों से खेला है डाउन द ग्राउंड और एक डॉट बॉल। तो इस ओवर में अब तक चार डॉट बॉल्स डाली जा चुकी है। इस बार कट किया उस गेंद को, फील्डर गेंद के पीछे एक नहीं बल्कि 2 फील्डर्स भागते हुए पिकअप करते हुए और बीच में मिल जाएंगे आसानी से 2 रन। बाईस पे पहुंचते हुए रेहान 38 के गेंदों का किया है सामना। एक बार फिर से मोड़ा है लेग साइड में उस गेंद को, 1 रन। क्या दूसरे की कोशिश रहेगी? जी नहीं, 21 से संतुष्ट रेहान। 23 पे बल्लेबाजी करते हुए सदानंद अभी भी आए, 2 गेंदों में 2 रन उन्होंने बनाए हैं। तो ये पार्टनरशिप अभी भी 8 गेंदों में 5 रन और इसी तरह की कुछ बल्लेबाजी की ज़रूरत रहेगी जब बंजारा क्रिकेट क्लब सोचती होगी आगे, क्योंकि 107 रनों की मात्रा है ज़रूरत। 76 बोर्ड पे लग चुके हैं। 76 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर्स के बाद एक बार फिर से स्ट्राइक रिटेन करेंगे रेहान बाली। दिखने वाली बात रहेगी गेंदबाजी में फिर से एक बार सांच अपना तीसरा ओवर लेकर किस तरह से खेल आगे बढ़ेगा वो देखने वाली बात रहेगी। 76 पे 2, अभी भी 15 ओवर्स का खेल खत्म हुआ है। अभी भी बहुत सारा खेल इस मैच में आना बाकी।
इसी बीच सांझ अपना तीसरा ओवर लेकर रेहान होंगे सामने। थोड़ी सी उछलती हुई गेंद पड़ने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेला उस गेंद को। पहला गेंद डॉट। लगातार तीसरा ओवर सांझ के लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया कलेक्शन भी विकेट कीपर आर्यन चौगुले का। अगली गेंद कट किया उस गेंद को फील्डर। बढ़िया डाइविंग एफर्ट, सिंगल को डिनाई करते हुए। माफ कीजिएगा, सिंगल तो ले चुके हैं। अब सदानंद रहेंगे स्ट्राइक पे। इस बार हल्के हाथों से केला सिंगल लेने की कोशिश, पर वापस भेजा है रेहान वाली ने। और सही डिसीजन भी, क्योंकि बॉल बहुत नज़दीक थी विकेट कीपर से। इस बार कट करने की कोशिश, वाइड की मांग, और जी अंपायर बिल्कुल सहमत। वाइड का इशारा अंपायर से आता हुआ तो और एक अतिरिक्त रन के माध्यम से रन जोड़ा जाता हुआ स्कोर बुक में 78 पे पहुंचता हुआ स्कोर। अभी भी 105 रनों की ज़रूरत यहाँ से मैच जीतने के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, अरमान वहाँ पे तैनात, लेकिन थोड़ा सा फंबल जिसके चलते मिल जाएगा और एक सिंगल। रेहान अब रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करते हुए अपने टीम की 24 बना चुके हैं। 42 गेंदों का सामना किया है। इस बार बढ़िया शॉट, पर कोई रन नहीं। रौनक वहाँ पे तैनात है। थोड़ा सा फंबल पर अच्छा बैकअप वहाँ पे अरमान द्वारा। इसी बीच 16 ओवर्स की होगी समाप्ति। 16 ओवर्स के बाद 79 पे 2, 79 for 2 and runs required are 104 from here on. Meanwhile, a fresh over being started from the far end. It is Raunak Naik back into the attack and picks up a single of the very first delivery. Does Sadan and Lamani, and Rehan back on strike now. This time watchfully played under the eyes, the batter. Third ball, we are into the 17th over, and 80 for the loss of 2. The Banjara Cricket Club chasing 183. Good looking shot, straight to the man, bit of a fumble. Will allow them to scamper for one. Quick running between the wickets, no loud calls, just watch into the eyes of each other and run away. Cheeky single, this is called. Back on strike is Salan and Lamani. Play down the ground, the field stationed will pick it up and will be just single, I guess, to come up. 82 for the loss of 2 in the 17th over. No big shots as yet, as they are not required. They are well and truly on track. Now 101 required from 199 deliveries. The required run rate is just 3.5. This time watchfully played. Raunak not getting there, but will end the 17th over in a fashion of a dot. After 17, it is 182 for the loss of 2.
101 required from 198 deliveries. Sadanand Lamani betting on 5 of 6 deliveries, and Rehan Bali is betting on 25 of 47 deliveries. It will be backly persistent with, I guess, Sanch into the attack for his 4th over. 3 overs he bowled for 10, picked up a wicket to his credit, and a prize wicket of that man Chetan Lamani to his name. Watchfully played under the eyes, a front foot defense, full press. Next delivery from Sanch. Tries to sweep down on one knee. Aryan Chogule getting to the ball. Meanwhile, single has been cultured up. 83 comes on the board. Exactly 100 required from here on. This time, drifting down the leg side wide is the signal. This time, up and over the infield. The ball is racing towards the boundary. 2 fielders converging. One of them will pick it up and throw towards the wicket keeper. Aryan Chugule collects the ball. Meanwhile, couple of runs more, 86. The score moves to control of the match. No need for control of the match. No need for those big and gutsy shots. Meanwhile, another dot to wrap up the over number 18 after the completion of 18 overs is 87 for the loss of 2. Back with the 19th over, in comes Raunak and starts off with a wide. Not a best start on the part of the bowler. This time into the gap, bit of a fumble, throw coming at the way of the wicket keeper. Rehan batting on 28 of 51 deliveries, 6 of 9 deliveries for Sadanand Lamani. In comes Raunak. Will be good bit of cricket all around. Meanwhile, running, the fielders are behind the ball. The batters are running for the second run. A wayward throw. Aryan Chugure, he came almost close to the 30-yard circle and collected the throw. Was a tired throw by the wicket keeper.
by the fielder towards the wicket keeper. Raunak on the other hand, if we talk about him, into his third, just given away 10 runs. Cut away, and the fielder giving the chase behind the ball. The ball will win the race in the boundary cushions. Will be a boundary, and a boundary to that man. Sadan and Lamani. 95 on the scoreboard in the 19th over. 88 more from here on in 188 deliveries. 100 balls exactly extra than the target. 88 from 188 runs. 88 runs from 188 deliveries is the equation. This time, down on one is swept away and swept away fine into the fine leg region, and will be a boundary. Sanch was behind the ball, but he will not get there. 2-2 for Sadan and Lamani, and he will walk along on 14 of 11 deliveries with 2 consecutive boundaries to his credit. 99 for the loss of 2. Banjara Cricket Club in the 19th over. Sadan and Lamani taking from where Chetan Lamani left off. This time trying to cut, was very close to the body to cut it. And this sums up the 19th over. After the completion of 19, it is 99 for the loss of 2. 84 more from 186 deliveries is the equation. And if we talk about these two, Sadan and Lamani betting on 14 of 12 deliveries with 2 boundaries to his credit. Rehan Hubali betting on 31 of 53 deliveries with 3 boundaries to his credit. If we talk about the partnership, it is worth 28 of 32. If we talk about the last over, first a single, then a dot, then a wide, then a dot, then a 3-4, then a boundary, then a boundary, then a dot. 84 for runs required more. I think there should be some challenging. Twentieth over, and it is going to be a change in bowling. It is going to be the fresh bowler that is being introduced. 100 up on the scoreboard for Banjara Cricket Club. In the 20th over. Meanwhile, a decent bowling as well. The second wicket goes down, and it's looking like
Spinners are doing well here. 99 for the loss of 2. Tandem in operation of the spinners. Meanwhile, another boundary, a solitary boundary coming the way of the batters. And it is looking like Banjara Cricket Club is in a hurry to wrap up this match. They're quickly piling up the runs and getting towards the target in quick succession with the batters out in the center. They are looking pretty set after losing those 2 wickets. One in the initial stages, second in the midway. But the batters out in the center are doing well for them. $19.408 on the scoreboard. Arush into the attack. Meanwhile, well stopped. To sum up the over number 20, after the completion of 20 overs, it is 108 for the loss of 2 and 75 more from 180 deliveries is the equation. With Sadan and Lamani betting on 22 of 16 with 4 boundaries, and Rehan Ubali on 32 of 55 deliveries with 3 boundaries to its credit. Well and truly, Rehan Ubali is on that mission to get first to 50, then pile up the runs on the board. The partnership between these two, 37 of 38 deliveries. And it will be change in bowling. It will be Avnish Kerkar into the attack. Avnish Kerkar, a fresh bowler that has been introduced by the keeper of the bowling side, because he knows the most important are the wickets at this point of time. Only you can win the match just by picking up wickets. No other option left for the bowling side. Although it was their choice to win the toss and bat first, but the decision of batting first going all wrong here for the team in yellow. COG Lion Juniors winning the toss, electing to bat first. The decision proving wrong here from the skipper. Meanwhile, next delivery. Trying to cut that ball, getting the edge of the bat through to the boundary. It will be a boundary from the bat of Sadan and Lamani, who is also keeping up with Rehan Ubali. He's batting on 26 of 17 deliveries with 5 boundaries to his credit. What innings this is. He's getting underrated with the innings of Rehan, but he is quicker than much quicker than Rehan. Once again, guided away that ball round, fielding there inside the 30 yards, will pick it up, but will not stop the batters from crossing over to the single. The current run rate is 5.556,
but required is way below that, 2.34. Almost the required current run rate is almost the double of what they are scoring at, what they are required at rather. This time short wide, misfield from the field. (116) on the scoreboard. We are into the 21st over. Now once again short and wide, Raunak, the fielder fielding the ball, will be a dot. Rehan still on strike. 116 for 2. This time once again, Raunak fielding the ball, picks it up. Another dot to wrap up the over number 21 after the completion of 21 overs. It is 116 for the loss of 2. With Rehan Ubali batting on 35 of 59 and Sadanan Lamani batting on 27 of 18 deliveries with 3 boundaries and 5 boundaries each. And as we can see on the ground, as they know the spinners are operating in tandem, they have opted for caps. Both of them, Rehan Abali and Sadanan Lamani, have opted for caps from the dressing room. And in comes Avnish Kerkar to continue with his bowling, continue with his off spin. (16) 116 for the loss of 2. Continued leg spin rather. First ball, a dot ball of the 22nd over. Sadanan Ramani batting on 27 of 19. They are both of them well and truly on the track to get towards that 50. Tries to sweep, gets it fine. Aryan Chogale bend the ball, will give up the chase in the boundary cushions, and will be a boundary to Sadanan Lamani. And quickly he will get to 31 of 20 deliveries with 6 boundaries. What a batting this has been. Batting at a strike rate of 155.00. (120) on the scoreboard for the loss of 2. Down the ground, bowler fumbles in the follow through, but a dot ball that came the way of the bowling side. Another flighted delivery from the bowler, played straight back. Bowler fielding the ball in his follow through. Next delivery. This time clipped away in the leg side region. The fielder patrolling the boundary will cut it off. Meanwhile, just a single taken. Next delivery is a bowling diagonal. The leg spinner
This time, once again in the air and away from the fielder, the boundary rider once again in action, and will be another decent over as it comes to the batting side. It's 22 overs done. It's 122 for the loss of 2, and Sadanan Lamani batting on 32 of 23, and Rehan playing a share anchor role to him. Although Rehan is the senior partner, but he is playing a share anchor role to the batter at the other end, batting on 36 of 60 deliveries. Ayush, Arush and Avnish are the two bowlers who are operating in tandem. One has the economy of 7.50, another has the economy of 8 runs per over. The way these two are batting, they are making it look difficult for the team COG Lions. 61 more from 168 deliveries is the equation. Simple tactics, single double, and the game is done and dusted in the favor of Banjara Cricket Club. But most importantly, Banjara Cricket Club needs to keep that wickets in their hands. No harakiri required, no losing of wickets required at this point of time. (32 of 23). What a innings it has been from Sadanan Lamani. 6 boundaries to his credit. After a short break, so in comes the change in bowling. It comes
Back in attack, Prachit. For the 23rd, starts off with a single. Chance of getting the second run, but rightfully sent back. $123.60 move from here. Tries to sweep down on one knee. Wide is the signal from the umpire. So another extra. 124 for the loss of 2. 59 more from here. Again, इस बार सही ढंग से खेला है. पॉइंट के रीजन में फील्डर तैनात. डॉट बॉल आ जाएगा. और इसी के साथ 23वें ओवर में थोड़ा सा पेस दिखाई देता हुआ, तेज गेंदबाजी दिखाई देती हुई प्रचित की ओर से डाला जाता हुआ ओवर. स्ट्राइक पे रहेंगे सदानंद लमानी. इस बार खेल दिया है फाइन और गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर. फील्डर को करेगी बीट, जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर. मिल जाएगा और एक चौका. 7वां चौका आ जाएगा सदानंद लमानी के बल्ले से, तो स्कोर पहुंच जाएगा 128 रन. और सदानंद लमानी व्यक्तिगत 36 रन के योग पे बल्लेबाजी करते हुए. क्या इनिंग्स रही है इस बल्लेबाज की. हालांकि 61 बॉल खेले रेहान उबाली ने, बनाए 37 रन, पर यह इनिंग्स क्विक फायर इनिंग्स उनके ऊपर से भी दबाव हटाती हुई. इस बार हल्के हाथों से मोड़ा है, कलाइयों के सहारे लेग साइड में खेल दिया. उस गेंद को मिल जाएगा और एक सिंगल. सेंसिबल क्रिकेट सदानंद लमानी की ओर से. तो पिछले गेंद पर चौका मारा, इस गेंद पर सिंगल निकाला. दोनों बल्लेबाज 37 के योग पर बल्लेबाजी करते हुए. 56 रनों की यहां से रहेगी दरकार. इस बार कट किया है, गैप में जा रही है गेंद. फील्डर वहां पे देना डॉट बॉल और एक खेलते हुए रेहान उबाली पर. डॉट बॉल्स यहां से चिंता का विषय ना होकर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. अगर बात की जाए बंजारा क्रिकेट क्लब की, 129 रन लक्ष्य के स्कोर बोर्ड पर और रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 1.99 का. इस बार भी खेल दिया है, ऑफ साइड में सिंगल मिल जाएगा और 23 ओवर्स की होगी समाप्ति. 23 ओवर्स की समाप्ति के बाद 130, 2 विकेट के नुकसान पे और 53 रनों की जरूरत 162 गेंदों में. और इसी के साथ और एक विकेट रन आउट के माध्यम से खोती हुई बंजारा क्रिकेट क्लब. और एक लगता है कि सबसे बड़ा झटका शायद अब लगा है जब वापस जाते हुए बल्लेबाज सदानंद लमानी
और आखिरी विकेट जो रन आउट के माध्यम से गिरा था वो गिरा था सदानंद लमानी, जिन्होंने बनाए 37 रन 37 in 26 deliveries with 7 बाउंड्रीज टू हिज क्रेडिट। और नए बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी करने उतरे हैं रोमान मुल्लम रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पे। देखना होगा रोमान क्या कमाल कर पाते हैं इस सिचुएशन में। हालांकि बहुत समय रहे हैं रोमान इसी नंबर पे बल्लेबाजी किया करते हैं जब हम उनको देखते हैं ऑक्सफोर्ड कलर्स में भी। और इसी बीच और एक सिंगल भी जोड़ा जाएगा ऑफ द ब्लॉक्स क्विकली। रोमान मुल्लम आते हुए और एक सिंगल निकाल कर दूसरे ओर जाकर रेहान बारी को स्ट्राइक देते हुए। रेहान 38 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना होगा क्या कर पाते हैं। विराट करते हुए रेहान शायद कुछ घटा वहां पे जिसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से ये बैकआउट करते हुए ढील स्कूप लगाने की कोशिश, मिस कर गए उस गेंद को, पर किस्मत सही कि बल्ले का किनारा विकेट कीपर तक नहीं पहुंचा। थॉट बॉल एक और जोड़ा जाता हुआ। रोमान मुल्लम का आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लगातार शैडो प्रैक्टिस करते हुए, सोचते हुए अपने गेम के बारे में कैसे बल्लेबाजी करनी है। इस बार छोटी गेंद सामने उठा दिया है, फील्डर से दूर गिर जाएगी और अरमान शेख जब तक गेंद तक पहुंचते तब तक मिल जाएगा और एक सिंगल। और इस सिंगल के साथ 132 रन स्कोरबोर्ड पे लग जाएंगे। इस बार बढ़िया गेंद तेज तर्रार पड़ने के बाद काटा बदला उस गेंद ने और विकेट कीपर तक चली गई और एक डॉट बॉल इस ओवर में। अब तक बढ़िया गेंदबाजी रही है, अर्जुन जो की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक चौथा ओवर, अब तक 22 रन दे चुके हैं। इस बार छोटी गेंद हल्के से मोड़ा है उस गेंद को, विकेट कीपर आर्यन चौगुले गेंद के पीछे पिकअप करते, जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन मुकम्मल। और इन 2 रनों के साथ और एक ओवर की होती हुई समाप्ति, 24 ओवर की समाप्ति। 24 ओवर की समाप्ति के बाद 134 पर 3 बंजारा क्रिकेट क्लब अभी भी 49 रन यहाँ से बनाने 156 गेंदों में। और रोमान मुल्लम जो कि बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंद में 3 रन बनाकर रेहान बारी एक स्लो इनिंग्स पर 66 गेंदों में 39 रन, और जिसकी ज़रूरत भी, क्योंकि जानते हैं थोड़े से रन बचे हुए, गेंदे बहुत ज़्यादा आपको सेटल्ड इनिंग्स खेलने की ज़रूरत। पहले मैं जैसे जिक्र कर रहा था, टॉस जीतकर पहले एक बल्लेबाजी करने का फैसला वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत प्रूव होता हुआ, और अब गेंदबाजी में बदला। पहला ओवर लेकर भव्या गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। पहली गेंद स्ट्रेट बैक टू दी बॉलर, खेल दिया उस गेंद को, और थर्ड बॉल के साथ भव्या अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे।
एक रन माफ कीजिएगा मिल जाएगा। तो 135 पे पहुंच जाएगा स्कोर। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला है रोमान मुल्लम। जानते प्राइस लगाना अपने विकेट पे और वही लगा के खेलते हुए उनको सिखाया गया है कि अपने विकेट पर प्राइस लगाओ, अपने विकेट को संभाल के बल्लेबाजी करनी है और बड़े शॉट्स की ज़रूरत यहाँ पे तो नहीं है अगर देखा जाए तो। पर यहाँ पे बढ़िया शॉट और इस बार रोमान मुल्लम के बल्ले से आ जाएंगे रन्स और वो भी पूरे 4 रन। पहला चौका रोमान मुल्लम के बल्ले से खुद के व्यक्तिगत 7 रन के योग पर पहुंचते हुए रोमान मुल्लम। क्या बढ़िया शॉट था वो तेज गेंदबाज के सामने। आप अगर ऐसे गेंदबाजी बल्लेबाजी करोगे तो आप समझ सकते हैं कितने सेटल्ड बल्लेबाज। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला जैसे टैप एंड रन। जैसे देखा फील्डर थोड़ा सा दूर है तब तक सिंगल के लिए निकल पड़े रोमान। तो और 1 रन के साथ 140 का टप्पा पार कर चुके बंजारा क्रिकेट क्लब। अभी भी 43 रन दूर उस जीत के लक्ष्य से और रेहान हुबाली बल्लेबाजी करते हुए 40 के ऊपर। इस बार खेल दिया है फील्डर वहां पे तैनात, पिकअप कर लेते तब तक आ जाएगा और एक डॉट बॉल। 140 पे रुका हुआ स्कोर। हम 25वें ओवर में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो काफी नीचे आता हुआ। इस बार बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड, फील्डर तैनात, पिकअप करते थ्रो करते तब तक मिल जाएगा सिंगल। रेहान हुबाली क्या इनिंग्स रही है। जानते थे शुरुआत से प्रेशर नहीं था पर रन्स का आना बहुत जरूरी। 25 ओवर की समाप्ति, 25 ओवर की समाप्ति के बाद 141 फॉर द लॉस ऑफ 3 और उसमें से 41 रन आए बल्ले से रेहान हुबाली के। तो 100 रन बाकियों ने मिलके बनाए। 41 रन जो है अकेले रेहान हुबाली ने बनाए हैं अब तक और उस 50 को टारगेट कर रहे होंगे अभी। मात्र 9 रन दूर उस 50 से। तो गेंदबाजी में बदलाव एक बार फिर से। अर्जुन छोटी गेंद खेल दिया उस गेंद को, अपर कट सा शॉट और 1 रन जोड़ा जाता हुआ स्कोर बुक में। तो 142 पे पहुंचता हुआ स्कोर, 142 रन। पहले गेंद पर सिंगल। रोमान मुल्लम अब स्ट्राइक पर, देखना होगा क्या करते हैं रोमान मुल्लम। 8 रन बना चुके 6 गेंदों में, 1 बाउंड्री उसमें शामिल। देखा जैसे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज क्रीज पर तो राउंड स्टंप्स। गेंदबाज ने कौन बदला है अपना, कौन तो बदला है, क्या बदल पाएंगे किस्मत अपनी और अपने टीम की, गेंदबाज देखने वाली बात रहेगी। इस बार आगे बढ़कर उस गेंद के करीब जाकर खेला रोमान ने और एक सिंगल खाते में जुड़ता हुआ। सिंगल डबल्स से काम बन जाएगा, जानते हैं बंजारा क्रिकेट क्लब। इसीलिए रेहान हुबाली और रोमान मुल्लम दोनों को बोल के भेजा गया है कि सिंगल डबल्स से काम बन जाएगा। आपको बहुत बड़े शॉट्स, बड़े रिस्क की ज़रूरत नहीं है। इस बार छोटी गेंद हवा में खड़ी हो गई है गेंद, विकेट कीपर पास तो गए थे लेकिन उस कैच को पकड़ नहीं पाए और सबसे शायद बड़ी कैच को आर्यन
चौगुले ने शायद ड्रॉप कर दिया है, ये कैच ड्रॉप हुआ है या मैच आने वाला समय बताएगा। पर गलती आर्यन चौगुले से, पहुंच गए थे आर्यन चौगुले, ग्लव्स आपके हाथ में, आपको एफर्ट देना होता है, पर उस कैच को लपक नहीं पाए और एक रन जोड़ा जाएगा स्कोर बुक में। 144 पे पहुंच जाएगा स्कोर। और एक पटकी हुई गेंद, उस गेंद को पुल करना चाहते थे रोमान मुल्लम, पर अगर मैं पिछली कैच की बात करूं तो पकड़ा जाना चाहिए था विकेट कीपर के द्वारा। पहुंच गए थे पर उस कैच को लपक नहीं पाए आर्यन, और शायद यहां से मैच बन सकता था फील्डिंग साइड के लिए। इस बार फिर से छोटी गेंद, लेग साइड इस गेंद, उसको हेल्प कर दिया रोमान मुल्लम, और एक चौका इस बार रोमान मुल्लम के बल्ले से आता हुआ। तो एक तरफ का ही तो दूसरी तरफ हुआ, कैच छोड़ा रियान बाली का, स्ट्राइक चेंज होकर रोमान मुल्लम स्ट्राइक पर आए और उन्होंने जड़ दिया चौका। तेज गेंद थी, गेंदबाज के पेस को यूज किया और हेल्प कर दिया उस गेंद को चौके के लिए। फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन और जुड़ गए खाते में, और 4 कदम जीत की ओर बढ़ाए। और अब सामने शॉट, एक पीछे तो दूसरा सामने, और लगातार दूसरा चौका रोमान मुल्लम के बल्ले से, और 26 ओवर की समाप्ति और 150 भी स्कोरबोर्ड पे। बंजारा क्रिकेट क्लब 152 पे 3, अभी भी है 31 रनों की जरूरत बचे हुए 144 गेंदों में। और गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी में गेंदबाज दिखाई देते हुए तारक चित्तम, जिन्होंने कि 1 ओवर किया था लंच से पहले, वो वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर 152 पे 3, 31 रनों की यहाँ से जरूरत। रेहान वाली जो कि बल्लेबाजी करते हुए 43 के व्यक्तिगत योग पर स्ट्राइक पे रहेंगे। सामने गेंदबाज तारक चित्तम। इस बार सामने शॉट, फील्डर तैनात अरमान जब तक पिकअप करते थ्रो करते तब तक मिल जाएगा सिंगल। ऑफ स्ट्राइक चले जाएंगे रिहान पर 1 रन के साथ, और एक कदम उस 50 की ओर, 50 की ओर, मात्र 6 रन दूर। पर फिलहाल स्ट्राइक पर रोमान मुल्लम। इस बार छोड़ा जाने दिया, और एक डॉट बॉल छोड़ा जाएगा स्कोर बुक में। 30 रनों की मात्रा है जरूरत यहाँ से मैच जीतने के लिए।
इस बार छोड़ा जाने दिया बहुत बार ऑफ स्टंप से, तो और एक वाइड बॉल का इशारा था। 156 पे पहुंचेगा स्कोर। रोमान मुल्लब 17 रन 11 गेंदों में, और रेहान बाली 44 72 गेंदों में। इस बार कट किया, फील्डर तैनात। क्या रन आउट का मौका बनेगा? जी नहीं, मिल जाएगा और एक सिंगल। अट्ठाईस रन मात्र दूर इस जीत से, और रेहान बाली 44 44 रन पे बल्लेबाजी करते हुए 50 की ओर निश्चित रूप से देख रहे होंगे। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर से दूर, बाउंड्री राइडर पहुंच जाते, पिकअप करते, थोड़ा सा फंबल, जिसके चलते दूसरा रन भी लिया है बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ और 2 कदम उस 50 की ओर रेहान ने बढ़ाए हैं, और 46 पे पहुंच चुके हैं रेहान। इस बार हवाई फायर डाउन दी ग्राउंड, फील्डर से दूर। देखना होगा फील्डर जब तक पहुंचे तब तक, और 2 रन मुकम्मल, तो और 2 रनों के साथ आगे बढ़ेगा इस ओवर में, यानी कि इस इनिंग्स में कारवा, और 48 पर पहुंच जाएंगे। रेहान बारी मात्र 2 रन दूर, आज के दिन का पहला 50 रेहान से। स्ट्राइक पे रहेंगे रेहान बारी। दिखने वाली बात रहेगी किस तरीके का उनका अप्रोच रहेगा। फील्ड में बदलाव, सारे फील्डर्स सिंगल सेविंग पोजीशंस पर। इस बार कट किया है उस गेंद को, फील्डर से दूर, बाउंड्री राइडर तैनात। जब तक पिक करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन मुकम्मल, और इसी के साथ 50 रन भी मुकम्मल। रेहान वाली, क्या इनिंग्स रही है इस बल्लेबाज की। पचास मात्र 75 गेंदों में 3 बाउंड्रीज के साथ 50 पूरे, और 27 ओवर्स के बाद 161 पर 3, मात्र 22 रनों की जरूरत। यहां से 138 गेंदें डाली जाने बाकी। रोमान मुल्लम और इसके साथ रेहान बाली, ये जोड़ी बंजारा क्रिकेट क्लब के लिए बीच मैदान में, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर से दिखाई देते हुए। फुलन की गेंद खेल दिया है उस गेंद को, और एक सिंगल से और एक कदम नजदीक पहुंचती हुई है टीम अभी आते हुए गेंदबाजी करने के लिए अपने चौथे ओवर में। एक 162 पे पहुंचता हुआ स्कोर। इस बार हवाई फायर, अब जानते हैं रेहान बाली 50 रन बना चुके हैं, और अब थोड़ा सा एक्सेलरेटर पर पांव लगाते हुए, और बीच में 2 रन और रेहान बाली के नाम 52 रन के व्यक्तिगत योग पर खेलते हुए रेहान। मात्र 76 गेंदों का सामना। इस बार स्टीयर कर दिया उस गेंद को, फील्डर तैनात, पर फिर भी
मिल जाएगा सिंगर और 1 रन स्कोरबोर्ड पे लग जाएगा। बढ़िया कॉलिंग, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों। अब रोमान स्ट्राइक पर, और जैसे लेफ्ट हैंडर को देखा, ना सिर्फ गेंदबाज में अपना कोण बदला, फील्डिंग में भी बदलाव। इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट, सॉलिड शॉट, लेकिन सिंगल से खुश बल्लेबाज। थोड़ा सा फंबल जिसके चलते चौका मिल जाएगा। 4 रन सिंगल के लिए दौड़े जरूर थे, लेकिन मिस्टेक, गलती फील्डर से और फील्डर के गलती के चलते 4 रन। रोमान मुल्लम क्विक फायर 23 फ्रॉम 14 डिलीवरीज, 4 चौके उसमें शामिल। रोमान मुल्लम एक बार फिर से स्ट्राइक पर, 14 रन यहां से मात्र बनाने। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड शॉट, फील्डर से दूर, बाउंड्री राइडर भी फंबल, और ऐसा लगता है गेंदबाजी टीम गिव अप कर चुकी है। 2 गेंदों में 2 गलतियां फील्डर के ओर से और 2 चौके, मतलब 8 रन जो फील्डर्स की गलती की वजह से बल्लेबाजी टीम को मिलती हुई। अब मात्र 10 रन दूर यहां से मैच जीतने के लिए बंजारा क्रिकेट क्लब, और स्ट्राइक पे रहेंगे रोमान मुल्लम, जो कि 15 गेंदों में 27 रन बनाकर खेलते हुए। इस बार हवाई फायर, इस बार फील्डर से दूर, इस बार फील्डर के लिए कोई मौका भी नहीं छोड़ा रोमान मुल्लम ने, और एक चौका। लगातार 3 गेंदों पे 3 चौके लगाकर बढ़िया एग्जीक्यूशन करते हुए रोमान मुल्लम 31 पे पहुंच चुके हैं। मात्र 6 रन दूर यहां से बंजारा क्रिकेट क्लब ये मैच जीतने के लिए। और इसी बीच 28 ओवर्स की समाप्ति, 177 पे 3, बंजारा क्रिकेट क्लब 10 रन दूर इस मैच को जीतने से। और गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी करते दिखाई देंगे एक बार फिर से दूर वाली छोर से। रेयांश जो कि गेंदबाजी करने आते हुए, मात्र 10 रन चाहिए। किस तरह का रोल रहेगा रेहान का, देखने वाली बात रहेगी। रोमान मुल्लम तो एक ही जानते हैं, सी द बॉल हिट द बॉल। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर तैनात, जब तक आते पिकअप करते तब तक सिंगल निकाल लिया, और एक कदम जीत की ओर बढ़ा लिया बंजारा क्रिकेट क्लब ने। अब स्ट्राइक पे रहेंगे रोमान, मात्र 5 रन दूर बंजारा क्रिकेट क्लब यह मैच जीतने से। इस बार बल्ले से दूर, हिटिंग आज से दूर रखने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर से, तो और 1 रन। अब मात्र 4 रनों की जरूरत यहां से। ये फुल टॉस, और रोमान मुल्लम हिट करने की कोशिश, 2 रन निकालने में सफल रहे हैं। 2 रन के साथ और 2 कदम जीत की ओर
बढ़ाने में सफल रहे रोमान। इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, प्रॉपर टाइमिंग नहीं। मात्र 1 रन दूर इस जीत से बंजारा क्रिकेट क्लब। फुल टॉस और एक बार, इस बार रोमान उल्लम गेम को खत्म करके वापस आते हुए और जीत होती हुई बंजारा क्रिकेट क्लब एक बेहतरीन जीत के साथ सफर थमता हुआ इस मैदान पे आज के दिन। और देखना होगा मैन ऑफ द मैच की ओर निगाहें रहेंगी। कई सारे कंटेंडर्स उस मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए। और प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो भले और गेंद के साथ जिन्होंने कमाल दिखाया वो चेतन लमानी। क्या मुकाबला रहा है, आखिरकार जीत बंजारा क्रिकेट क्लब की और लंबे मार्जिन से जीत बंजारा क्रिकेट क्लब की होती हुई। तो आज के दिन का एक्शन यही थमता हुआ और जीत के साथ बंजारा क्रिकेट क्लब अब एंजॉय करती हुई और हम आपसे लेते हैं विदा। होप यू एंजॉयड द मैच एंड इट्स अ गुड बाय फ्रॉम द कॉम बॉक्स।
सो पहली गेंद और पहली सफलता, पहला विकेट बंजारा क्रिकेट क्लब का वापस डग आउट में जाता हुआ। और पहले आउट होने वाले बल्लेबाज ने बनाए 0 रन और नए बल्लेबाज जो कि नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने उतरते हुए आयुष गांवखेर की जगह पर चुके हैं और उसी एक्सपीरियंस को यहाँ यूज करते हुए एक बार फिर से रक्षात्मक ढंग से खेला हुआ शॉट, अभी भी खाता खोलना बाकी बंजारा क्रिकेट क्लब का। इस बार मोड़ दिया है कलायु के सारे, 1 रन मुकम्मल हो जाएगा। पहले रन स्कोरबोर्ड पे 1 पे 1 पहले ओवर में यहाँ पे बंजारा क्रिकेट क्लब। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, अगली गेंद रौनक की, यहाँ पे कट करना चाहते थे पर बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। अच्छा कलेक्शन वहाँ पे विकेट के पीछे सांझ नाइक का। इस बार हल्के हाथों से खेला, रक्षात्मक ढंग से खेला, सीधा गेंदबाज की ओर पिकअप करते और डॉट बॉल के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे बंजारा क्रिकेट क्लब। और गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए जो पहले मैच में विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए थे आर्यन छोगिले वो गेंदबाजी करते हुए। इस बार ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा जरूर आएगा अंपायर से, तो और 1 रन अतिरिक्त के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आप मजा देखिए क्रिकेट का, जो पहले मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे आर्यन चौगिले वो अब गेंदबाजी करते हुए, और पहले मैच में जो गेंदबाजी करते थे कि सांच नायक वो विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाले हुए। तो वर्सटाइल ये गोवन क्रिकेट फ्यूचर स्टार्स 1 विकेट के नुकसान पे। और पैडेड अप दिखते हुए अभिषेक लमानी जो कि फोकस्ड दिखते हुए ग्राउंड पे। इसी बीच बढ़िया गेंद और आर्यन छोगुले, अगर हम बात करें तो एक वर्सेटाइल क्रिकेटर और एक अच्छे बल्लेबाज, उसके साथ एक अच्छे विकेट कीपर, उसके साथ एक अच्छे गेंदबाज और फील्डर भी, तो ऑलराउंडर सही हैसियत जो थी एक ऑलराउंडर की उनके पास। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर से थोड़ी सी गलती, गेंद चलती जाती हुई बाउंड्री की ओर, मिल जाएंगे पूरे 4 रन और इस चौके के साथ डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा स्कोर पहुंच जाएगा 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, सब 21 स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद आर्यन छोगुले,
फ्लाइटेड गेंद थी, खेल दिया उस गेंद को फील्डर से दूर, एक बार फिर से बाउंड्री राइडेड। एक्शन में सिंगल मिलता हुआ, 12 पे पहुंचता हुआ स्कोर, फील्ड में होता हुआ बदला हुआ। आरव विराजदार खेलते हुए सीधा फील्डर के पास, डॉट बॉल। फैजान शेख और आरव विराजदार की जोड़ी बीच मैदान में बंजारा क्रिकेट क्लब के लिए। इस बार खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, फील्डर वहां पे तैनात रौनक नायक, जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक और एक सिंगल मिल जाएगा। स्कोर पहुंच जाएगा 13 रन। फैजान शेख अब होंगे स्ट्राइक पे। इस बार बढ़िया शॉट हल्के हाथों से खेला, उस थर्ड मैन के एरिया में मिल जाएगा और एक सिंगल। तो 2 ओवर्स की होगी समाप्ति। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 14 पे 1 बंजारा क्रिकेट क्लब। गेंदबाजी में एक बार फिर से अगमन, रौनक नायक से तीसरा ओवर और व्यक्तिगत अपने कोटा का दूसरा ओवर लेकर रौनक नायक गेंदबाजी के मोर्चे पर। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, रौनक नायक को वेलकम टू द क्रीज कहते हुए चौके के साथ थोड़ी सी गलती फील्डर से और उसके चलते मिल जाएगा 4 रन पूरे। फैजान शेख इस बार बढ़िया गेंद, कॉटन बोल्ट का मौका पर आगे गिरता हुआ बॉल और डॉट बॉल और एक आता हुआ चौके के बाद। अंपायर कुछ समझाते हुए रौनक को। स्वीप करने की कोशिश, स्टॉपेज, कैच का मौका, क्या जाएगा लपका पर नहीं, फील्डर से दूर। एक बार फिर से गेंद गिरती हुई और 2 रन और मिल जाएंगे। स्कोर पहुंच जाएगा 20 रन। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर 15 ओवर का ये मैच। इस बार बढ़िया गेंद, सामान दिया उस गेंद को और एक बार फिर से रन अप पे रौनक नायक। इस बार बॉडी से दूर लेकिन खेल दिया था उस कट शॉट को, लेकिन एक बाउंस पे पहुंच जाएगी फील्डर तक, मिल जाएगा सिंगल। स्कोर पहुंच जाएगा 21 रन तीसरे ओवर में। आरव मिराजदार और फैजान शेख ये जोड़ी बीच मैदान में। इस बार हवाई फायर आरव और दूसरा विकेट मिलता हुआ गेंदबाजी टीम को। आरव विराजदार वापस डगआउट, 21 पे 2 बंजारा क्रिकेट क्लब।
फैजान शेख स्ट्राइक पर एक कदम था और उसी के साथ मिल जाएगा सिंगल। अरमान जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक और एक रन। और आरुष और फैजान शेख रितेश इलेगर की छोटी क्रीज पर फैजान शेख जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर फील्ड सेट करते हुए सांझ विकेट कीपर टीम के स्ट्राइक पे रहेंगे फैजान। एक बार फिर से एक बेहतरीन बल्लेबाज फैजान शेख। इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद, थोड़ा सा फंबल फील्डर द्वारा, पर अंततः फैजान शेख क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इस बार फैजान खेलना चाहते थे लेकिन प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। एक बार फिर से चौथा ओवर जो कि प्रगति पर। एक बार फिर से फैजान ऑफ साइड पे खेलते हैं उस गेंद को, फील्डर वहां पे तैनात, मिल जाएगा सिंगल और स्ट्राइक पे रहेंगे। इस बार हवाई फायर, क्या कैच का मौका बनेगा? जी नहीं, स्ट्रेट अवे पार्क्ड आउटसाइड द रोप्स और ए मैक्सिमम। बढ़िया शॉट फैजान शेख के बल्ले से। एक बढ़िया शॉट दिखाई देता हुआ अरमान शेख और फैजान शेख के दोनों भाई ओपोजिशन कैंप में खेलते हुए। और इसी के साथ 4 ओवर्स की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 2 विकेट के नुकसान पे और रितेश इलेगर और फैजान शेख की जोड़ी बंजारा क्रिकेट क्लब के लिए अभी भी क्रीज पर। और गेंदबाजी में एक बार फिर से आर्यन चौगुले। इस बार कैच गया लपका और इस बार रितेश इलेगर वापस डगआउट में आते हुए एक सॉफ्ट डिसमिसल, कॉट एंड बोल्ड आर्यन चौगुले। वापस डगआउट रितेश इलेगर, नए बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए जिनका हम सभी लोगों को इंतजार। अभिषेक लमानी नए बल्लेबाज क्रीज पर। देखना होगा अभिषेक लमानी क्या कर पाते हैं। 31 पे 3 बंजारा क्रिकेट क्लब 5वें ओवर में। और अभी अभी विकेट निकाला है और वो निकाला है आर्यन चौगुले ने। अगली गेंद आर्यन की फेस करेंगे अभिषेक लमानी। डिफेंसिवली खेला, फील्डर वहां पे तैनात, थोड़ा सा फंबल लेकिन डॉट बॉल के साथ आगे बढ़ेगा कारवा। इस बार बढ़िया शॉट फील्डर के पास में जाएगा सिंगल। अभिषेक लमानी ऑफ द ब्लॉक्स। बत्तीस पे पहुंचता स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार
कलाई के सहारे मोड़ दिया लेग साइड रीजन में, फील्डर वहाँ पे तैनात, बाउंड्री राइडर जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक और एक रन जाएगा। फैजान शेख और अभिषेक लमानी ये जोड़ी बीच मैदान में, अभिषेक लमानी अब स्ट्राइक पे। इस बार सॉफ्ट हैंड से खेला, डिफेंसिवली खेला और डॉट बॉल और एक मिल जाएगा। तो डिसेंट ओवर अब तक रहा है अरियन चौगुले द्वारा। इस बार ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ, तो 5 ओवर्स की होगी समाप्ति। 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद 33 पे 3 बंजारा क्रिकेट क्लब। बचे हुए 10 ओवर्स, और 10 ओवर्स में कितने रन बना पाएगी बंजारा क्रिकेट क्लब, यहाँ से ये देखने वाली बात रहेगी। और गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी करने के लिए तारक चित्तम गेंदबाजी के मोर्चे पर 6ठा ओवर लेकर अपनी टीम की ओर से इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर से थोड़ा सा फंबल, एक रन मात्र मिल जाएगा। 34 रन स्कोरबोर्ड पे कुल मिला के लग जाएंगे। छठे ओवर में तीन विकेट के नुकसान पे बंजारा क्रिकेट क्लब इस बार हवाई फायर, फील्डर से दूर पर जब तक बाउंड्री राइडर पिक करते थ्रो करते अरमान, तब तक मिल जाएगा सिंगल, जो कि एक रन से आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। सेट होना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, जानते हैं 15 ओवर का फॉर्मेट है, कहीं ना कहीं से 1-2 बाउंड्रीज भी आना बहुत ही ज़रूरी। इस बार हवाई फायर पर बल्ले का किनारा थोड़ा सा आगे गिरता हुआ, फील्डर से एक बेहतरीन थ्रो, सांझ का बेहतरीन कलेक्शन भी, लेकिन बल्लेबाज अभिषेक लमानी क्विक बिटवीन द विकेट्स। अभिषेक लमानी अब होंगे स्ट्राइक पे, क्या करेंगे तारक चित्तम के खिलाफ देखने वाली बात रहेगी। इस बार फुल टॉस गेंदबाज के सर के ऊपर से खेल दिया है, फील्डर है वहां पे तैनात, पिकअप करते थ्रो करते तब तक मिल जाएंगे 2 और रन अभिषेक लमानी, और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी दौड़ाते हुए एक बार फिर से बढ़िया गेंद तारक चित्तम की कलाई के सारे मोड़ दिया उस गेंद का, अरमान तैनात, जब तक फील्ड पिकअप करते थ्रो करते तब तक मिल जाएगा सिंगल। और इसी के साथ 6ठा ओवर शो की प्रगति पर इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर से दूर, बाउंड्री राइडर रौनक नायक जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक 1 रन और मुकम्मल। $39 for the loss of 3, और छह ओवर्स की समाप्ति, 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद 39 for the loss of 3। अभिषेक लमानी और उन्हीं के साथ फैजान शेख का ये जोड़ी, और गेंदबाजी में अर्जुन, इस बार बढ़िया गेंद अर्जुन द्वारा। 7वां ओवर जो कि प्रगति पर
क्विक ओवर्स डाले जाते हुए। अर्जुन जिनको देखा था हमने पहले के मैच में तेज गेंदबाजी करते हुए, अब स्पिन का रुख अख्तियार कर लिया है उन्होंने। देखना होगा स्पिन या फास्ट से कारगर साबित होते हैं। अब तक तो बढ़िया लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी करते दिखे पहले 2 गेंदों में। अपनी टीम के लिए 40 पे पहुंचा है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर में। इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी लेकिन अपील होती हुई और आउट करार दिए जाते हुए अभिषेक लमानी। सरप्राइज अभिषेक अंपायर से पूछते हुए कि मैं क्रिस के अंदर खड़ा था, पर अंपायर का मानना कि क्रिस शॉट और अच्छा स्टंपिंग भी वहाँ पे सांझ द्वारा। और एक विकेट, चौथा विकेट अभिषेक लमानी बैक टू द पवेलियन 40 पे 3। चालीस पे 4 माफ कीजिएगा। और अभिषेक लमानी के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जो कि क्रीज पर पहले गेंद पर आते ही शॉट खेला और गेंद बाउंड्री पार देकर जाएगी पूरे 4। तो 44 पे पहुंचा स्कोर। आते आते बल्लेबाज अंश हरमलकर ने लगा दिया है चौका, वो भी खिलाफ अर्जुन के। इस बार बढ़िया गेंद सम्मान दिया उस गेंद को। इस बार डॉट गेंद समझा, एक आखिरी गेंद इस 7वें ओवर की। फुल टॉस और उसे उड़ाना चाहते थे लेकिन प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुआ बल्ले से, तो अरमान के पास मिल जाएगा सिंगल। और इस सिंगल के साथ 7 ओवर्स की होगी समाप्ति। 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 बंजारा क्रिकेट क्लब। और गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी में आठवां ओवर और बढ़िया कट शॉट था लेकिन फील्डर वहां पे तैनात, बाउंड्री पे मिल जाएगा। और एक रन फंबल पे दूसरे रन के लिए भागते हुए फैजान, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी फैजान शेख। और उन्हीं के साथ नए बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी करने उतरे हैं। इस बार डाउन द ग्राउंड फील्डर और एक रन, 48 रन स्कोरबोर्ड पे। तो 8वां ओवर अवनीश केरकर की अगली गेंद कट के आए, उस गेंद को फील्डर से दूर, फील्डर का हाथ जरूर लगा, बाउंड्री राइडर स्लाइड पे पिकअप और उसके बाद थ्रो। तो 2 रन मुकम्मल।
50 स्कोरबोर्ड पे लगते हुए बंजारा क्रिकेट क्लब के लिए 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर से थोड़ी सी गलती और जिसके चलते 51 पे 4। आठ ओवर्स की समाप्ति के बाद 51 पे 4 बंजारा क्रिकेट क्लब और नए गेंदबाज कागमन उथाबा। प्रचीत फुल टॉस लेग साइड में और बल्लेबाज ने कहा थैंक यू टू द बॉलर और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, मिलकर देखा जाएगी पूरे 4। बहुत बुरी गेंद और उसको पुट अवे कर दिया है बल्लेबाज ने। 4 रन के साथ आगे बढ़ेगा इस ओवर में, इस इनिंग्स में कारवा तो 57 फॉर द लॉस ऑफ 4। 9वां ओवर जो कि प्रगति पर प्रचित गेंदबाजी के मोर्चे पर। एक बार फिर से इस बार फील्डर को ढूंढा है, सीधा फील्डर के गोदी में और 5वां विकेट। आधी टीम बैक टू द पवेलियन, 57 फॉर द लॉस ऑफ 5 बंजारा क्रिकेट क्लब। इस बार पहले गेंद पर चलता किया है बल्लेबाज को और एक विकेट, कंसेक्यूटिव 2 विकेट्स गिरते हुए और 59 पे 6 अब बंजारा क्रिकेट क्लब। नए बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए 59 पर 6 है बंजारा क्रिकेट क्लब और नए बल्लेबाज जो कि क्रीज पर आ चुके रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर।
यश नाइक इस बार लड़के हाथों से खेला, थोड़ा सा फंबल जिसके चलते मिल जाएगा सिंगल और स्कोर पहुंच जाएगा 60 रन 6 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर्स की समाप्ति के बाद। तो बचे हुए 6 ओवर्स और 6 ओवर्स में कितने रन बना पाएगी बंजारा क्रिकेट क्लब, देखने वाली बात रहेगी। स्पिनर्स का आगमन होता हुआ ऐसा लगता है, स्पिनर नहीं पर तारक चित्तम का आगमन हो चुका है गेंदबाजी के मोर्चे पर। तारक चित्तम गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से। नीचे रहती हुई गेंद, अच्छा कलेक्शन भी सांझ का। सांझ के अगर हम बात करें तो थ्रू आउट हिज करियर विकेट कीपर रहे हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं। तो आर्यन चौगुली की तरह और एक प्रॉपर ऑलराउंडर। एक बार फिर से और एक अच्छा शॉट जिसके चलते और एक सिंगल बन जाएगा स्कोर के खाते में। 61 पे पहुंच जाएगा स्कोर। इस बार कट किया उस गेंद को, बाउंड्री की ओर जाती हुई वो गेंद। फील्डर रौनक नायक जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक और एक सिंगल। (62) 62 रन स्कोर बोर्ड पर। 6 विकेट के नुकसान पर बंजारा क्रिकेट क्लब इस बार छोड़ा जाने दिया वाइड का इशारा अंपायर का, तो और एक रन एक्स्ट्रास के माध्यम से जोड़ा जाएगा स्कोर बुक में। तो 63 रन लग जाएंगे स्कोर बोर्ड पर। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर आते जब तक पिक कर दे तब तक और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो और एक रन 64 रन स्कोर बोर्ड पर। तारक चित्तम अगली गेंद के साथ। इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट और एक बल्लेबाज वापस पवेलियन। 7वां विकेट बंजारा क्रिकेट क्लब का वापस लगा आउट। 64 फॉर द लॉस ऑफ 7 बंजारा क्रिकेट क्लब। नए बल्लेबाज सदानंद लमानी बल्लेबाजी करने उतरते हुए। इस बार हवाई फायर, इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री की ओर, पर फील्डर पिकअप करेंगे जब तक थ्रो करेंगे तब तक। ओवर थ्रोस भी जिसके चलते मिल जाएंगे 2 रन। 66 पे पहुंच जाएगा स्कोर। 10 ओवर्स की समाप्ति के बाद 66 फॉर द लॉस ऑफ 7 बंजारा क्रिकेट क्लब। और गेंदबाजी में आगमन अरमान शेख गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए। दूर वाले छोर से अरमान
और स्ट्राइक पे रहेंगे। अरमान नए ओवर की शुरुआत, 11वां ओवर डालने आते हुए अरमान पहली गेंद पे डॉट। देखना होगा आगे किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे अरमान। इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है, फील्डर से दूर, फील्डर बनेंगे दर्शक। 1 बाउंस 2 बाउंस, बाउंड्री के बाहर, 4 रन और स्कोरबोर्ड पे जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट अगली गेंद, हवा में गेंद, कैच छूटता हुआ और एक खिलाड़ी वापस डगआउट जा सकता था, लेकिन कैच का मौका वो निकलता हुआ फील्डिंग साइड। अब तक कैचेस के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने, पर ये कैच लपका जाना चाहिए था। अरमान के नाम शायद 1 विकेट हो सकता था। इस बार फिर से आगे बढ़कर खेला है उस शॉट को, गैप में जाती हुई गेंद, फील्डर वहां पे तैनात, बाउंड्री राइडर जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक और रन्स स्कोरबुक में जोड़े जाएंगे। सदानंद लमानी उन्हीं के साथ यश नाइक के ये जोड़ी 73 पे पहुंचा स्कोर। अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, एक बार फिर से हेल्प अलोंग कर दिया उस गेंद को, फील्डर पीछे भागते हुए नजर आए पर गेंद जीत गई और रेस मिल जाएंगे पूरे 4 रन और 81 पे पहुंच जाएगा स्कोर 81 फॉर द लॉस ऑफ 7। 11वें ओवर में आखिरी गेम संभवतः आने बाकी इस 11वें ओवर की। इस बार फिर से एक बार छोटी गेंद, उस तरह का बाउंस नहीं मिला जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे दोनों बल्लेबाज और विकेट कीपर, पर विकेट कीपर द्वारा फंबल और जिसके चलते और रन्स 22 के माध्यम से शायद नजर आए। 1 रन अब सदानंद लमानी स्ट्राइक पर। 11 ओवर्स की समाप्ति, इसी बीच 11 ओवर्स की समाप्ति के बाद 79 फॉर द लॉस ऑफ 7 बंजारा क्रिकेट क्लब। सांच एक बार फिर से हेलमेट उठाते हुए नजर आए, इसका मतलब स्लोइश बॉलर तारक चित्तम, शायद नाजी नॉट तारक चित्तम, आयुष गेंदबाजी करने आते हुए पहली गेंद को स्वीप कर दिया है और गैप में रौनक से दूर मिल जाएंगे पूरे 4। अगली गेंद देखना होगा किस तरीके का कमबैक रहेगा गेंदबाज का। एक बार फिर से स्वीप की कोशिश, लेकिन शायद बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद, प्रयास तो जरूर किया था सांच ने लेकिन पकड़ नहीं पाई उस कैच को।
और एक रन जोड़ा जाता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 83 रन, 83 for the loss of 7. इस बार स्विच हिट, टेनिस बॉल में जिस शॉट को हम बार बार देखते हैं उस शॉट का एग्जीक्यूशन, और भले ही सिंगल मिल जाए पर ओवर थ्रोस के चलते और रन्स भी मिल जाएंगे। और टेनिस बॉल में जिस शॉट को हम बार बार देखते हैं उसी शॉट का एग्जीक्यूशन लेदर बॉल में भी करते हुए बल्लेबाज। इस बार प्रॉपर टेनिस बॉल क्रिकेट का दर्शन देते हुए हटकर शॉट खेला है, विकेट कीपर के पीछे मिल जाएंगे पूरे 4 रन और खाते में जुड़ जाएंगे, तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़ जाएगा 90 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 11.4 ओवर्स का खेल हो चुका है। एक बार फिर से उसी शॉट को दोहराना चाहते थे पर और एक सिंगल मिल जाएगा स्कोर के खाते में, तो 91 पर पहुंच जाएगा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। यश नाइक जो कि होंगे स्ट्राइक पर। इस बार फुल टॉस और उसको भेज दिया है बाउंड्री के पार, मिल जाएंगे पूरे 4 रन। तो ओवर की शुरुआत भी चौके के साथ, ओवर का अंजाम भी चौके के साथ। 12 ओवर्स की समाप्ति, 12 ओवर्स की समाप्ति के बाद 95 फॉर द लॉस ऑफ 7 बंजारा क्रिकेट क्लब। आरुष गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से। इस बार अपील और अंपायर अनमोड पर मिल गया है सिंगल। बेसिक्स ऑफ द क्रिकेट है, अपील करते मत रहिएगा, बॉल को भी देखिए। तो काफी देर पर अंपायर की उंगली खड़ी और एक विकेट वापस डगआउट पर। बेसिक्स ऑफ द गेम है, जब तक अंपायर की उंगली खड़ी नहीं होती तब तक आप गेंद से दूर नहीं रह सकते। और 8वां विकेट बंजारा क्रिकेट क्लब का वापस डगआउट जाता हुआ। इस बार देखना होगा नए बल्लेबाज जो कि क्रीज पर आ चुके हैं। हवा में गेंद, सामने शॉट, फील्डर से दूर, 1 रन और छियानवे 96 पे पहुंच गया स्कोर। अर्जुन करते हुए गेंदबाजी और यश नाइक स्ट्राइक पर 6 रन लमानी। 50 ओवर के गेम के मैन ऑफ द मैच जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार कट किया इस गेंद को, फील्डर तैनात, पिकअप थ्रो और 1 रन। अब 6 रन होंगे स्ट्राइक पर। इस बार खेल दिया है उस गेंद को फील्डर से दूर पर, बाउंड्री राइडर तैनात और 1 रन स्कोर बुक में।
तो 98 पे पहुंच चुका है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट, फील्डर तैनात, जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक डॉट बॉल और एक आती हुई। इस बार बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर से बाउंड्री राइडर है तैनात और एक रन स्कोर बुक में। तो 99 पे पहुंचता हुआ स्कोर। 13 ओवर्स की समाप्ति, 2 ओवर्स बाकी, 99 फॉर द लॉस ऑफ 8 और 12 गेंदे यानी कि 2 ओवर्स का खेल पहले इनिंग्स में बाकी। और पेनल्टी में ओवर लेकर एक बार फिर से गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज प्रचित। इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट, फील्डर तैनात, जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक और एक रन स्कोरबोर्ड पर। 100 का आंकड़ा स्कोरबोर्ड पर बंजारा क्रिकेट क्लब के लिए। 100 फॉर द लॉस ऑफ 8। इस बार उठा दिया उस गेंद को बाउंड्री की ओर, गेंद जाते हुए फील्डर वहां पे तैनात, मात्र मिल जाएगा सिंगल। 101 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड शॉट, बाउंड्री राइडर, जब तक पिक करते थ्रो करते तब तक और एक रन स्कोरबोर्ड पर। और थ्रोज 102 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 14 ओवर जो कि प्रगति पर। इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल और एक अथवा तो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ 14वां ओवर। चेतन लमानी जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर, यश नायक जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार उड़ाना चाहते थे उस गेंद को लेग साइड में अलॉन्ग द कार्पेट खेल दिया है। फील्डर जब तक पिक करते, अरमान थ्रो करते तब तक और एक रन। यश अब आ जाएंगे स्ट्राइक पे। आखिरी गेंद संभवतः है 14वें ओवर की। प्रचित की अगली गेंद। इस बार हवाई फायर, गेंद फील्डर से दूर और फील्डर से दूरी रहेगी, बाउंड्री के पार जाएगी। पूरे 4 रन मिल जाएंगे और इस 4 रनों के साथ 14 ओवर की समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 107, 8 विकेट के नुकसान पे बंजारा क्रिकेट क्लब। और आखिरी 6 गेंदे और आखिरी 6 गेंदों में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रौनक। इस बार खेलना चाहते थे गेंदबाज की ओर, रन आउट का मौका नहीं जी, नहीं। 15वां ओवर, 5 गेंदे बाकी, 107 रन, 8 विकेट के नुकसान पे बंजारा क्रिकेट क्लब। कहाँ तक जाएगी ये बंजारा क्रिकेट क्लब की टीम, देखने वाली बात रहेगी। इस बार स्विप कर दिया है
फील्डर पिकअप करेंगे, जब तक थ्रो करेंगे तब तक। और एक रन ओवर थ्रोज पर अरमान वहाँ पे तैनात। रौनक नायक अच्छी गेंदबाजी की थी। इनिंग की शुरुआत अभी इन्होंने की थी, इनिंग का अंजाम भी यही करते हुए। वहाँ पे फील्डर तैनात, गेंदबाज की ओर थ्रो, तो और एक रन जोड़ा जाता हुआ स्कोर बुक में। चेतन लंबानी स्ट्राइक पर। इस बार गेंद को छोड़ा जाने दिया, लेकिन अंपायर का मानना कि वाइड बॉल 110 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार हवाई फायर देखना होगा, फील्डर का भरसक प्रयास पर। जी हाँ, बिल्कुल बॉडी ऑन द लाइन डालकर उन्होंने उस बाउंड्री को रोका है और मात्र दिया है सिंगल। इसका मतलब कि 3 रन अपने टीम के लिए बिल्कुल बचाए हैं। इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, अपील पर स्टम्प्स को डिसलॉज करते हुए विकेट कीपर पर स्क्वेलिंग अंपायर का मानना कि बल्लेबाज बिल्कुल अपने क्रीज में सुरक्षित। इस बार कट करना चाहते थे, विकेट कीपर्स ग्लव्स में रेस्ट करती हुई गेंद और ओवर की समाप्ति। इसी के साथ इनिंग्स के भी समाप्ति। बंजारा क्रिकेट क्लब ने बनाए 111 रन, मतलब 112 क्लब 112 रन बनाने हैं 15 ओवर्स में, जब बल्लेबाजी करने उतरेगी सीओजी लायंस की टीम। 112 रनों का लक्ष्य रहेगा दूसरे इनिंग्स में। और हम आपसे जुड़ेंगे दूसरे इनिंग्स के लाइव एक्शन के साथ कुछ ही देर में।
for Roman Mullam. On strike, Arjun alongside him, Ved and Reigel are the two opening batters for COG Lions Juniors. And with the ball in hand, it is going to be Ritesh Illegar to start off the proceedings. Will be a single bit of fumble by Roman Mullam. A waiver throw, and this is what Roman Mullam is saying. A waiver throw, where you are throwing the ball, see at me and throw the ball. With an Eagle on strike. This time watchfully played by Ved and Eagle. Will get off the blocks. This time a strong shot into the gap. The fielder will cut it off. Good connection by Roman Mullam as well. So 3 runs on the scoreboard in the very first over. Let it go wide is the signal. 4th run on the scoreboard. Vedant Eagle alongside Arjun. Dancing down the track, Vedant Eagle playing straight to the field. Fifth run on the scoreboard, 5 without a loss. Arjun on strike. Good looking shot on the ground. Will be just a one. Yes, it is. First over is in progress. 6 runs already on the board. For Ritesh Illegal. Straight back to him. Shy the stumps. But might have had hit Vedant Eagle on the way. To sum up the over number 1 after the completion of the first over, it is 6 without a loss. COG Lions Juniors. Meanwhile, start of the second over, and it is going to be Ansha. This time a good looking shot.
This time off the bottom half of the bed, Roman Mullam trying to get to that ball, but getting to it in quick time. 7 without a loss. Vedanta Eagle back on strike. This time appeal. But no, says the umpire. A single to Vedanta Eagle. 8 runs on the scoreboard. Still second over is in progress. This time trying to go big. Roman Mullah missing the ball. The ball is off to the fence and will be a boundary. On the scoreboard, still into the second over. This time played into the leg side region. The fielder will give up the chase in the boundary cushions. 2 into 2 boundaries consecutively for that man Arjun. To sum up the second over after the completion of 2 is 16 without a loss. So going at the rate of 8 runs per over are COG Lions Juniors. And it will be a change in bowling. It will be Ayush Gaukar into the attack to bowl the third over. Up against Vedanta Eagle. Good looking shot, straight to the man. Will be a single. This time a good looking shot, aerial shot. Right into the front of the square and will be a boundary. Will be a boundary. The boundaries have started to come now. COG Lion Juniors are well and truly on the track. And in quick succession, they are moved to 21. Once again in the air and falling in no man's land. The fortune favors the brave. Will be a single. Rather getting Vedanta Eagle back on strike. Watchfully played under the eyes. Vedanta Eagle side stumps. Will be another single. Roman Mullam not happy with that throw. This time a good looking shot once again, straight to the man. Vedanta Eagle back on strike. 24 without a loss in the third over. Played into the leg side region by Vedanta Eagle, straight to the man. Will be a single run to bring the close to the third over after the completion of 3. It is 25 without a loss. Are COG Lions Juniors.
And it's the start of the fourth over. It is going to be Chetan Ramani. Watchfully played by Vedant Tiger. Yes, no, yes, no. And finally, the wicket is saved for COG. Vedant Tiger still there, fortunately. Bowler pulling out of his run up might have got something wrong on the way through. Is going to his run up. He will reload. This time a good looking shot down the ground with Antigal. The fielder cuts it off just for a single. 26 the score moves to. Arjun now on strike. Arjun places straight to the man. No run on the delivery. (26) without a loss. Fourth over of the innings. This time a good looking shot, aerial one, and where it goes, up and over, and will be a biggie. (32) Arjun playing a good role here. Is batting on 20 of 11 deliveries. Chetan being put under hammer. Bowled good throughout the day, but now he's being put under some tab. Next delivery. We are waiting for that ball to come back. Come back in play. Yes, it has arrived finally. This time once again going down the ground. There is protection there. We'll pick it up, throw back. Meanwhile, it will be a single, and Vedant Tiger will come on strike as well. 33 without a loss is COG. And this time a single denied, and sum up the fourth over after the completion of 4. It's 33 without a loss. COG Lions Junior.
This time a good looking shot away from the field and would have been a maximum if there would have been a fielder as well. No tension. Second maximum for that man, Arjun. The score straight away has taken to 39 and signaling for water is Arjun. Asking towards the dressing room. Cap rather. He will be asking for cap. Good looking shot it was. Welcome to the crease with a big one. Abhishek Ramani certainly will be still shock. This time once again trying to swing that ball aerially, but didn't make any contact with the ball. The batter Arjun was a dot ball bowled by Abhishek Ramani. This time once again trying to hit that ball down on one knee. Missing the ball completely. This time it goes down the ground. The field station will pick it up and throw towards the bowler. Will be single, 40 runs on the scoreboard. Vedant Daigal on strike. This time Vedant Daigal also goes down the ground just for a single. Vedant Daigal knows at this point of time he needs to play that sheer anchor role. This time once again down on one knee. This time over the fielder's head. Third maximum for that man Arjun. And what an innings he is playing. What an innings he is playing for his side. He is in a hurry to finish that match off quickly. And he is raced away to 32. The score is 45 without a loss in 5 overs. 10 overs more to go, and in those 10 overs you need to get 67 runs in 10 overs. 60 balls, 67 is the equation. And the way especially Arjun is batting, is looking in hurry. It will be a change in bowling. It will be Chetan Lamani back. Good looking shot by Vedant Daigal rather than hitting himself. Vedant is happy to give a strike to Arjun. Let him hit. 46. This time he goes another. It's time. It's another biggie. Another biggie. At this point of time, Arjun is saying, go and fetch the ball out of the park. Fourth one, a biggie for him. He is making it count. 38 for him individually. The score is 52 without a loss. Once again he goes big. Once again the ball is out of here. Once again he is out of here. Consecutive 2 maximums from
the bat of that man up against the bowler who has bowled decently throughout the day. Chetan Lamani, being put under hammer here, is quickly moved to 44 runs. There's Arjun. 44 for Arjun, just 6 runs away from that 50-run mark. Full and delivery, well played along the carpet, just for a 1. Now Vedant Eagle is on strike. His role is to give strike to the man at the non-striker's end, and he's doing so. This time a dot ball. Vedant Eagle will be pretty happy by giving strike to his partner at the other end, because he's going big. This time pulled away in front of square, and fielder station will pick it up, and will be another single to give strike to that man. Arjun meanwhile sums up the over number 6 after the completion of 6 is 60 without a loss. And Arjun is batting on 45 runs, 5 runs away from that 50. Abhishek Lamani back into the attack. Vedant Eagle play and a miss, a dot ball. This time Vedant Eagle also tries to get his hand towards that boundary. Will be just a single to bring back Arjun on strike. 61. Once again, this time in the air, might be the fielder taking the catch. Yes, it is a wicket, and a prize wicket of that man Arjun, who is walking back to the pavilion for 45 runs. Individual score of 45 is walking back to the pavilion. Is 61 for the loss of 1. And the new man walking in, Arman Sheikh. Wicket picked up by Abhishek Lamani, and a prize wicket of Arjun. Watchfully played by Arman, just for a single to open his tally.
62. Vedant Aigal, the man on strike. Vedant Aigal, the man on strike. Abhishek Lamani, the bowler. Watchfully played. Straight to the man. 62 on the scoreboard to sum up the over number 7 after the completion of 7 overs. It is 62 for 1. Vedant Aigal, the man on strike. A single run, catch it up. Arman Sheikh on strike. Arman tries to get a single, but rightfully sent back by the non-striker. Oh, playing a miss by Arman. Arman hold it out. Second wicket for the team Banjara Cricket Club. 64 for the loss of 2. Arman walking back to the pavilion soon after Arjun Parish. They are losing the wickets at a regular interval now. Firstly, Arjun walked back, now Arman walking back and invokes Aryan Chogule. Starts off with a single Aryan Chogule. Vedant Aigal still at the crease. Sums up the over number 8 after the completion of 8 overs. It is 65 for the loss of 2. Aryan Chogule plays it watchfully. This is his cricket, playing the ball at its merit. This time away from the batter, the ball is racing towards the boundary, but the field station will pick it up and will be just a single. Now both these batters letting
Meanwhile, Abhishek Lamani has bowled well. Tries to sweep Vedant Eagle. Will be just a single. And Aryan Chugule back on strike. This time India, but Roman Mullam couldn't hold on to it. Watchfully played uphill. And Aryan is walking back. Certainly, what has happened? What has happened to the team of COG? Back to back, 3 wickets. First Arjun, then Arman, and now Aryan Chogule, who is walking back to the pavilion. Still shock, 70 for 3. This time once again, another appeal. And that's a not out. And the start of the new over. Start of the fresh over. And 70 for the loss of 3. Full toss. Driven a bit of fumble. Vedant Eagle back on strike. India and taken. Another wicket goes down. Fourth wicket is Vedant Eagle who is walking back.
Ronak Naik on strike. First ball. A single run that has been cultured up. This time straight to the man. $74 for the loss of 4. Once again, another one of the team back in shed for COG Lions Juniors. एक के बाद एक अर्जुन ने की थी शुरुआत. अब तक आते ही जा रहे हैं वापस ताश के पत्तों की तरह. New man walking in alongside Ronak. Reyansh. Appeal. And sums up the over. After the completion of 10, it is 74 for the loss of 5. Start of the fresh over. And the ball is coming towards the boundary. And buys and a 4. 78 for the loss of 5. Ronak Naik alongside Reyansh need to steady the ship now. This time watchfully played under the eyes. Ronak Naik. The ball is racing towards the boundary, but it has stopped inside the play. It has stopped inside the play. Can you believe it? A couple of runs to Ronak Naik and his side. The score has tickled away to 18. 80 runs on the scoreboard. Good looking shot down the ground. The ball is racing towards the boundary and it will cross over for boundary from the bat of Ronak Naik. Ronak Naik is saying, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं क्रीज पर तब तक टेंशन ना लेना मेरे दोस्तों. 84 for the loss of 5 in the 11th over.
Good looking shot once again away from the field in the point region. The boundary rider will cut it off. Meanwhile, turning back for second. Appeal. And up goes the finger. Up goes the finger. And straight away, we can see the head is coming down, and hands are on head as the runner walks back to the pavilion. $85 for the loss of 6. Newman walking in. Avnish. Down the leg. Wide is the signal from the umpire. The score had moved away to 87. Watchfully played. A dot ball. Still the 11th over in progress. 4 overs to go after this. Watchfully played. Guided that ball into the third man area just for a single. To sum up the over number 11 after the completion of 11 overs, it is 88 for the loss of 6 are COG Lions Juniors. This time appeal, but turned down by the umpire, saying it is a legal delivery. To start. This time it's again trying to play it watchfully. Will be a dot ball. Two consecutive dot balls to start off the 12th over. This time in the air, will be looking for that single. Yes, they do. $89 for the loss of 6. Clipped away in the lakeside region. Once again, another single. Rahman Mullam might have hurt himself on the way through. This time, top edge in the air. Falling short of the fielder. Chance of run out as well. Missed. Oh, dramatic scenes on the ground.
Dramatic scenes on the ground to sum up the over number 12 after the completion of 12 overs. It is 90 for the loss of 6. Certainly, all of them still shocked after losing those 6 quick wickets. And straight to the man, a bit of a fumble, chance of a run out. Oh dear. What has happened on the ground? And the throw has hit right on the helmet of the batter. Blocked away. India might be another chance, but falling in no man's land. (92). The score moves on to 92. This time played on the ground. Appeal. And the umpire said, yes, umpire says, yes, you are well out of your crease and you're out. Have to go back to the pavilion. The 7th wicket goes down and intention is Arman. Yes, the way he lost his wicket from there on. The team has lost its balance its way all the way through, and 7 wickets are down at the score of 92, chasing 112 for win. 92 for 7. Once again, a bit of fumble. The ball is racing towards the boundary, but stopped inside the field of play. 13th over in progress. 2 overs to go after this. Swept along and a pretty welcoming boundary for the team COG Lions Juniors. (14) required from 12 deliveries is the equation. Still, it is possible for COG. And it will be a change in bowling. It will be Ritesh Iliga to bowl the penultimate. Watchfully played. Single run. Might be turning for 2. Might be turning for 2. Appeal. And up goes the finger. Up goes the finger of this quelling umpire. And Roman Mullam has done it for his team. Certainly, the 8th wicket has gone down for 98. 98 for 8.
Watchfully played. Straight back to the ball. Prachit has walked out in the middle. Drifting down the leg side. Wide is the signal. Well collected by Roman Mullam behind the stumps. Will be 100 runs up on the scoreboard. Hundred for the loss of 8. This time watchfully played. Chance of run out. Oh, but getting there comfortably. 101. Still 11 required. Good looking shot. There is a protection, but fumble by the fielder and another welcoming boundary. The boundary is being cheered by every player of COG from the come box. And Avanesh has been the hero. 105 runs on the scoreboard. Can he do it for his team? Is the question to be answered. Good looking shot once again, but straight to the man. Will be another single. Overthrows and coming back for second. Coming back for second. 2 runs more. 2 runs more. 107 for the loss of 8. Steal a ball to go in this over and over after this. So 7 balls remaining. Good looking shot on the ground. Field stationed. Roman Mullam misses the stumps. Misses the stumps. Roman Mullam. And it sums up the over number 14 after the completion of 14 overs. It's 100 and 108. The emergency number is on the scoreboards. And 1 over. Just 4 runs required. One over 6 deliveries, 4 to get. Four required in 6 deliveries is the equation. And to bowl the final over, it is going to be Yash. Good looking shot, but straight to the man. Chance of run out. And might have break the stumps with the hands first. Yash. 5 balls, 3 is the equation now. Is it the side that is batting first, COG, or whether it is Banjara Cricket Club? The final 5 deliveries. Final 5 deliveries to go. Good looking shot, aerial shot over the bowler's head. And will be another single. $110, just 2 now. Just 2 now from here. COG. Good looking shot once again, away from the fielders.
And it goes into the boundary to win the match for COG. What a match this is. Finally a win for COG in the day, and it closes out the day with a win to both the teams, one each. It's a goodbye from here at Chocolate Ground, Alem.